अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। ट्विटर पे तो लोग बोलना शुरू हो गए हैं, शायद ये हमारी बेस्ट पॉडकास्ट हो, क्योंकि महीनों बुलाने के बाद आखिरकार हमारे बीच में हैं द वन दी ओनली अब्बास नासिर। फॉर्मर एडिटर हैं डॉन के, आप लोग सबने इनके कॉलम्स पढ़े होंगे डॉन पे। फॉर्मर एडिटर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर थे बीबीसी एशिया पैसिफिक के, और अभी मुझे बता रहे थे कि एक नाज़माबाद का लड़का किस तरह बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ तक पहुंचा, ये कहानी हम जानेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने मुझे मदऊ किया। और महीने मुझे मैं तो डर के मारे भाग रहा था, और जो दो चार मोहब्बत करने वालों ने बहुत ही जेनरस काइंड कमेंट्स किए, तो उनसे मैं और खौफजदा हो गया कि पता नहीं एक्सपेक्टेशन इतनी है, एंड आई मे नॉट हैव एनीथिंग वर्थवाइल टू से, बट विल गिव इट अ शॉट, बिकॉज सर आप एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट लिखना पढ़ना तो करना ही पड़ता है। इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। सर लगता है कई साल हो गए आपको अब कराची छोड़े हुए, आपके अंदर का नाज़माबादी निकल चुका है। कराची वाले कहाँ डरते हैं? I was a meek Nazmabadi. नो सच थिंग, नो No सच such थिंग। thing. हाँ, somebody वो who grew up in कराची, उसके पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं मीक होने की, बेचारे के हाँ पास। यार, वो थोड़ा सा तो वैसे जब आप स्पॉटलाइट डाल देते हैं ना, वैसे तो पीछे शैडोज में तो हम लोग कार्रवाई करने के माहिर हैं, लेकिन आप जो अच्छा। स्पॉट लैम्प रख देते हैं ना, तो जैसे लाइक अ हेयर इन द कार्स, वो रैबिट जिस तरह से वो गाड़ी की रोशनी में चुंदिया से जाके खड़ा हो जाता है, वो मेरा हाल हो जाता है। एनीवे, अच्छा। लेट्स किक अच्छा, दिस ऑफ। आपका आज यानी आपका भी मुत्तहिदा से वाबस्तगी रही है बचपन में? मुतासरीन में शामिल हूँ, वाबस्तगी नहीं रही। सर वो आज एक बड़ी आप, लंबी बड़ी आपको लंबी हमने जी कहानी है, जी वो किसी सुनाएं। और वक्त बताएंगे। यानी मुझे 92 से बीबीसी से ऑफर था कि मैं चला जाऊं, लेकिन मैं बजिद था कि नहीं, मैं मुल्क में ही रहूंगा। फिर कुछ 93 में कुछ कुछ ऑडेसिटी ज्यादा ही हो गई, कोई अपने आप को बड़ा तुर्रम खान रिपोर्टर समझ लिया, तो बस फिर ये घर वालों ने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है, यू जस्ट प्लीज गो, बिकॉज मतलब फिर क्या फायदा कि मारे जाओ को फेंक दे कोई, यहाँ तो पूछने वाला ही नहीं था उस वक्त के हम्म। जो हालात थे। सो देन आई डिसाइडेड टू गो, but obviously that was a that was a 12-year journey at the BBC, and then Don asked me to come back, and there I was on a plane within within a matter of months. और फिर 2006 से 2010 तक I had the great privilege of being the editor of the paper on all platforms. In fact, where I started as a trainee, as an intern in 83, 84. So that was a very emotional homecoming, but one which was very daunting as well, because I think Dawn was, by my reckoning, caught a little in the past, and I think the world had moved on. The world of media had moved on. हम्म। एंड एक जो इम्पेरेटिव उसमें होता है, जो बहुत ही अहम चीज होती है, कि जिस वक्त आप सिर्फ न्यूज़पेपर और रिकॉर्ड होते हैं और कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंस नहीं होती, टेलीविजन की, चैनल्स की, इलेक्ट्रॉनिक, अब जैसे तो वेबसाइट्स वगैरह की, तो यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ ही सेड शी सेड फ्रॉम द डे बिफोर। लेकिन अब तो लोग देख लेते हैं ना, अभी इमरान खान साहब अदालत में जा रहे हैं, आज ही वो उनके सारे मनाजिर आ रहे हैं। सो यू ओके कवर दैट स्टोरी, but what's the value addition you give to the reader, कि वो आपका अखबार उठाए, editorials, op-eds, but I think front page stuff also. So try to do my bit, but it was a tall order, and मैं तो फिर भी अच्छे वक्त में काम करके I promised myself and my family that we give it 4 years. तो फिर मैंने वापस चले जाने का सोचा, लेकिन उसके बाद, मेरे जाने के बाद जो मसाइल आए, तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू people who run Dawn, both on the editorial and in management, that they've kept themselves on their feet despite absolutely ludicrous odds sometimes. सर प्यार मोहब्बत से तो हमने सुना आपको बहुत फोन कॉल आई, ये भी आई थी कि कुछ टाइम के लिए बलूचिस्तान अपनी वोकैबुलरी से निकाल दें। प्यार के बगैर भी फोन कॉल्स आए, थ्रेट्स वाले? नहीं, मुझे इत्तेफाक ये था कि जिस पीरियड में मैं था ना, उसमें वो तो मेरे जाने के बाद आई थिंक थिंग्स टर्न रियली नास्टी अराउंड 2016-17 ऑनवर्ड्स।
और फिर तो साफी बेचारे बहुत नास्टीनेस से फैजियाब हुए, उनके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ टूटे। मेरे वक्त में सिर्फ ये था कि अच्छा, और कोई डायरेक्ट जो था ना, इदारा या फौज वाले फोन नहीं करते थे उनके बिहाफ पे, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, वेदर इट वाज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इट वाज कॉल्ड, मेरे ख्याल से पीआईओ होता था, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि वो कॉल करता था। तो वो एक दिन मुझे इसी तरह, मैं गाड़ी में बैठा था तो घर घर जा रहा था, कॉल आई कि वो सर, एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द हाईएस्ट इन द लैंड। तो मैंने कहा बताइए। कह लेंगे वो कुछ दिन के लिए बलोचिस्तान भूल जाइए। दिस इज, माइंड यू, आई टुक ओवर in May 2006. I went back to London to get my family, and the following day we were coming back when Nawab Bukti was killed. And then we came back, and I was just so curious, etc. Deployed one of the most amazing members of the team, who's now the editor of a rival paper, Behzad Alam Khan. I said, go incognito. I had some friends, contacts. Jao, ghumo phiro, dekho Balochistan mein. Don't report anything from there. Then come back and write. So he did some spectacular coverage. I mean, of an area where, for a wide variety of reasons, जर्नलिस्टों पे इस कदर दबाव था हर तरफ से, सरकार से, एजेंसी से, कि very little used to emerge from there on that critical security thing. अभी वो इस कदर, इस पैमाने की वो किल और डंप और टॉर्चर, और वो जो टॉर्चर बॉडीज बरामद हो रही हैं जिन पे उनकी आइडेंटिटी पेंड है, वो थोड़ा कम ही था उस वक्त तक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, बिकॉज झगड़ा तो शुरू हो गया था ना जब मुफ्ती साहब को मारा, उससे पहले ही इट वाज बिगिनिंग टू वार्म अप। सो तो मुझे ये कहा गया कि आप जो हैं हाईएस्ट इन द लैंड से, आपके लिए दरखास्त है, दरखास्त एक मामूली से एडिटर के लिए, कि आप बलोचिस्तान भूल जाएं कुछ दिन के लिए। तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं। आई पुट, जैसे उन्होंने फोन बंद किया, आई कॉल्ड अप माय डॉन्स कॉरेस्पॉन्डेंट इन क्वेटा, एंड आई सेड कि भाई आप जरा आंखें खोल के रखिए, कुछ होने वाला है। And lo and behold, there was some sort of an operation underway, so we covered it. अच्छा, और वो उस जमाने में उससे तो खैर, I don't know, I was never sure, quite honestly, whether Musharraf even cared, because जो pressure था वो आता भी था, it used to ebb and flow, वो कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था। लेकिन वो जो उसके बाद उनके जो वजीर आजम थे ना, वो ही हैड सम सीरियस इश्यूज। उन्होंने तो डॉन की कोई 8 महीने एडवर्टाइजिंग भी रोक दी थी, एंड माय मैनेजमेंट स्टक बाय मी, बिकॉज वो कहते थे कि जी सारे अखबार हमारा जो जो भी हम कहते हैं वो फ्रंट पेज पे लगाते, और आपका अखबार को एडिटर को फोन कोई करता है, वो कहता है मेरिट पे, अगर कोई उन्होंने चीज काम की कही होगी तो वो जहां भी होगी लग जाएगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं लगेगी, बिकॉज एवरी डे यू कांट गिव स्टेटमेंट्स, and my owners kind of stood by me, and we braved that for 8 months, which was this shortcut? शॉर्टकट अजीज ने आपको ये बोला था या? हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। और वो हमारा एक मरूम साथी था, इरफान मलिक, who was a master of the English language. उसने कुछ एक खास इदारिया ऐसे लिख दिए थे, मेरे ख्याल से उससे उनको शायद ज्यादा, I think quite often, and this is my counsel to the younger journalists, quite often it's not what you say that gets you into trouble, it's how you say it, कि वो आप जो है ना, मुश्किल खबर में खुदारा खुदारा चस्का मत लीजिए, साफ सुथरी उसको लिख दीजिए, क्योंकि वो जब when you enjoy it too much, you're writing it and you're loving it, you're not loving it for the content, you're loving it because you know that it's going to set somebody up on fire. And I think every journalist has real. I did very many stupid things when I was young. If we have time, we'll go through some of those, वही तो हम चाहते completely हैं। crazy. It's also interesting कि maybe this is also good advice for former prime ministers, कि जो former prime minister का आप जिक्र कर रहे हैं, जो रोज हेडलाइन न्यूज होना चाहते थे, उनका जिक्र शायद हिस्ट्री बुक्स में भी ना मिले। आई थिंक पीपल व्हेन if you quiz them on former prime ministers, आई थिंक शौकत अजीज लोग भूल भी गए हों। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आपको ये फोन कॉल आया, क्योंकि मैंने जिस तरह कॉलेज में लाइफ गुजारी है,
I'm sure at least some nights I was the highest in the land. ये कभी possibility Yeah. तो Well, if I delve way into my past, I could relate to something like that. We've lived तो a full इस life. I mean, 100%. absolutely no regrets. सो आई एम श्योर ये इतना डायरेक्ट नहीं होता होगा, क्योंकि अगर आपने एक फिजा बना दी है जिसमें ये चीज़ें नहीं रिपोर्ट करनी, तो वो सेल्फ सेंसरशिप भी उसमें आ जाती है। जिस तरह अकबर बुख्ती का जब फ्यूनरल भी हुआ, उस पर फायरिंग हुई थी, उस पर गोलियां चलाई गई थी। नाउ दैट शुड हैव बीन हेडलाइन न्यूज़। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी हैं, मतलब एक फ्यूनरल के ऊपर फायरिंग करना, इससे ज्यादा ब्लेटेंट चीज क्या हो सकती है? सो मैं द बताऊं ना, फैक्ट दैट आई थिंक मीडिया को खुद भी पता है कि रिपोर्ट नहीं करना, या खैर मैसेकर होता है तो हमें नहीं रिपोर्ट करना, दे नो इट देमसेल्व्स, दे डोंट नीड टू बी कॉल्ड I फॉर दैट। no exactly. I'll tell you. I think Zia perfected that. अच्छा, उसके बाद तो अब coercion से outright जो पिछले सालों में हुआ, particularly with this trio, with महज the बाजवा chief खान। and the DGISI and the DGISPR, the former one. I अच्छा, mean, गफूर। Asif Ghafoor. I mean, and some of their stuff, to be honest, was vicious, and a lot of it was so petty that मैं तो दोस्तों से बात करता रहता हूँ, and it's a shame, because you're not an occupation army. Your media is your own media. I mean, you can't threaten, coerce. The language they used to use. I mean, I'm not saying if they used it with everybody, but endless newsroom colleagues in different television channels, etc. देखो ना, बात तो सब करते हैं, बात आप खबर रोक सकते हैं ना, लेकिन आप उसका तस्करा, जो आपके रवैये उनका तो नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेल्फ सेंसरशिप जो थी ना, ये जिया ने परफेक्ट की थी। और उसने शुरू में तो इट्स अ क्लैंप डाउन और फुल ब्लडेड सेंसरशिप थी, लेकिन उसके बाद ऐसे पैरामीटर्स वेगली डिफाइन छोड़ दिए थे। तो वो मेरा और हमारी जनरेशन के एडिटर से यू नो इसरार रहता था कि let us push the frontiers, let us step on the line, and not stop way short of it. But I can understand. I was only responsible for my story that I was writing. They were responsible for the newspaper and for the well-being of the organization and staff, etc. और मैं बताऊं कि I mean, okay, I'm 63 now. I still follow my instinct, but I understand that journalism is a responsibility, and it's no adventurism. वो आप वो spirit जरूर fight की रखें, and I think fight जो है ना, it is fought in a number of ways. It's defiant, sometimes between the lines. I mean, I'll tell you, I was attracted to journalism. उस जमाने में डॉन में एक कराची डायरी छपती थी, गाजी सलाउद्दीन लिखते थे. I mean, he was masterly at saying things, between the lines. And I'm grateful that he said it, because not very many people were saying it then. Zia अपने उरूज पे थे, और जैसे मैं बताऊं ना, हम लोग तो शरारत करते थे. अब मैं आया न्यूज डेस्क पे बैठा, I was just subbing. This is 1984 or something. We got a copy of an Asghar Khan speech, I don't know, in Multan or Abbottabad or somewhere, where he uses language which said, when the constitution is restored in Pakistan, Zia-ul-Haq will be tried and hanged for the abrogation of the constitution and blah 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 for treason, etc. अच्छा, वो मैंने वो एडिट की स्टोरी उस जमाने में. यू डिडंट डू इट ऑन स्क्रीन, यू हैड हार्ड कॉपी, उस पे आप मार्क करके हेडलाइन, और हेडलाइन में लगा दी कि असगर खान vows to fight opportunist or something. अच्छा, वो देखी, इनसाइड पेज की कॉपी थी. आई डोंट थिंक द सेकंड पेयर ऑफ आईज बॉदर्ड, एंड वो छप गई. और उस पे जो कयामत हुई अगले दिन, वो आई कैन नेवर फॉरगेट. Ahmad Ali Khan Saab, the legend, I got a call at home, क्या ये, because they pulled it out of there कि ये किसने किया था. तो मुझे I can never forget. I mean, I could almost detect, I don't know, maybe I'm imagining it, a smile somewhere down there, that he liked in a way that this mad young man was doing this. But on the other hand, उनका, yeah,
मैंने कहा सर आई थॉट, कहेंगे बस प्लीज स्टॉप थिंकिंग, लेट अस डू द थिंकिंग, यू डू व्हाट्स डिमांडेड ऑफ यू, यू सब द कॉपी एंड यू पॉइंट आउट दीस थिंग्स टू योर नाइट एडिटर, यू कांट पुश इट, यू नो, अंडर, हालांकि मैंने उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने हेडलाइन देखी, उन्होंने कहा ये तो इनॉक्यूअस है, पीछे रख दो अंदर पेज की। एंड यू नो these were, but I'll tell you Shazad, अमर, आज तो हर कोई इस सोशल मीडिया पे, यू नो, आपके आबा अजदाद तक लोग पहुंच जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट in that environment of the 80s, you know, post MRD movement, crackdown, etc., these were not cheap thrills, these were significant from our perspective, of course, मतलब मैं कोई boastful नहीं हो रहा, लेकिन these were from our bits, you know, contributions to the act of defiance, you know, या यू नो किसी को एक्सिक्यूट किया, वो रात को पीआईडी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का फोन आता था न्यूज डेस्क पे के ये डबल कॉलम जाएगी और ये सिंगल कॉलम जाएगी, और ये I can never forget. I was so irritated. I wasn't the shift in charge. I was one of the younger members. I just took the call, and there was this gentleman. He said, "कि ये फलाने का execution और double column जाएगी." And I had the audacity to ask him कि इसकी तस्वीर भी double column जाएगी back page पे. And I don't know why he said yes. And I wrote it down, and I signed it and put it on the desk. And I asked Zahid Hussain, the veteran photographer, कि यार उसकी तस्वीर तो लाएं. He was there, the outside the jail. And you know, then we crop that photograph, and all we got in 2 columns, you know, 2 column photograph, the back was literally his face, you know, bedecked with flowers. Now can you imagine that somebody that Zia has executed on some trumped up terrorism charge gets his photo published and a long 2 column news item about what happened, etc., etc. Now, you know, you might say that this is an old idiot, you know, reminiscing about the past, which is nearly 40 years in the past, you know. तारीखी कहानियां तो हम सुनते रहेंगे, हम जरा मीडिया की मजबूरियों से पहले मीडिया की गलतियां भी थोड़ी निशानदेही कर दें। इन टर्म्स ऑफ द मीडिया लैंडस्केप, अगर आज भी हम टीवी चलाएं तो लिटरली पूरा दिन, पिछले 12 घंटे ऑलमोस्ट, इमरान खान कोर्ट आएंगे नहीं आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे नहीं उतरेंगे, इस वक्त डिफ़ॉल्ट की ब्रिंक पर है पाकिस्तान, इन्फ्लेशन इज़ इनसेन, लोगों के पास रोटी खाने के मसले मसाइल हो रहे हैं, सिंध में अब तक फ्लडिंग आई हुई है, बलोच मैन हैव बीन पिक्ड अप, टीटीपी राइज हो रहा है, इतने इश्यूज हो रहे हैं, और पूरा दिन मीडिया फोकस कर रहा है खान साहब गाड़ी से कब उतरेंगे, गाड़ी से कब निकलेंगे। सो डज मोस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो नॉट लुक एट दिस मीडिया, वेदर इट्स प्रिंट मीडिया, वेदर इट्स टेलीविजन मीडिया, एंड बी लाइक ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का मीडिया हो सकता है, बट ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। दोस्त, ये तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का भी मीडिया नहीं है, एंड आई टेल यू व्हाई। देखो, टेलीविजन करने का तो शौक बहुत है हमारे यहाँ लोगों को, दे डोंट अंडरस्टैंड द टेलीविजन इज अ कैपिटल इंटेंसिव मीडियम, ठीक है, इट कांट बी डन ऑन द चीप, और इट इज अ मीडियम दैट यू रिक्वायर अ सर्टेन स्किल टू डू, ठीक है। अब अगर आप बाहर के टेलीविजन देखें तो व्हाट वी कॉल पैकेजेस, यू नो, 1 घंटे के पीरियड में, यू नो, 4 से 6 पैकेज चलते हैं और बीच में इंटरव्यूज और ये। अब हमारे यहाँ तो ये बड़ा आसान है कि आपके स्टार एंकर्स हैं, वो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आई कॉल इज, यू नो, रेडियो एंड विजन, इट्स टॉकिंग हेड्स, आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, अच्छा, और आप जब इतना बोलेंगे 8-8, 12-12 घंटे, तो obviously issues will take a back seat. It is, you know, stupid competition. पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसके डायरेक्टर न्यूज के कमरे में बाकी तमाम टीवी चैनल्स की स्क्रीन ना लगी हो। अच्छा, वो एक ऑब्सेशन से देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, अरे भाई अपनी साफत करो। आई पर्सनली फील दैट मीडिया टुडे, you know, for whatever reason, is shirking a major responsibility. Just go out there, यार। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे दोस्त, आई लेफ्ट डॉन 13 years ago, इज्जतदार, शरीफ और काबिल किस्म के दोस्त, यू नो, आई कीप इन टच विद देम, वो ईमेल लिखते हैं, दीज आर अप मिडिल क्लास पीपल, यू नो। मैं बता नहीं सकता कि मैं इतने कर्ब में मुब्तला हो जाता हूँ उनकी स्टोरी सुन के, they've had to change schools of their children, they have to downgrade houses, they have to move this, they have to move that, you know, serious hardship, and these are people who are, I mean, at least theoretically on good salaries. तो यार मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन उसका कोई नहीं, अच्छा, और वो मसाइल अगर आपके आउटपुट में आते भी हैं ना, तो दे कम
वाया ब्लेमिंग दिस वन और दैट वन, कि वो जी आज फलानी पार्टी के फलाने ने दूसरे को महंगाई पे कह दिया, उन्होंने उसको कह दिया. Just go out in the streets. There's plenty of stories there. करते. I'm not saying nobody's doing it. I see some reporters. But, कोई थोड़ा perspective, कोई थोड़ा context. I think it's very important. What is missing from our journalism by and large, print में तो थोड़ा बहुत है, is the context. We just flick from literally like a fly from one pile of rubbish to the other, and we think we are doing great stuff. अब आज जैसे जो हो रहा, मैं आपके इस पॉडकास्ट शुरू होने से पहले घंटा डेढ़ से I was watching various Pakistani television channels, and एक हुजूम था हाई कोर्ट पे. Where is the story in there? भाई बेल होगी नहीं होगी, जब हो जाएगी तो पता चल जाएगा. Is it a major live event? Is it a law and order issue? It's none of that. It's just some game being played. That the assumption is कि एक आदमी जो घर पे जिसके बच्चे भूखे हैं, who's struggling to feed them, he'd be interested or she'd be interested in that. तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क भर में जो हालात हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो दूर दराज इलाकों की बात कर रहे हैं आप. मुझे ये बताइए कि आपके अपने शहर में, डिपेंडिंग ऑन हुज फिगर्स यू बिलीव, लेकिन 1.5 करोड़ से 2 करोड़, 2.25 करोड़ रहते हैं लोग. Do you really feel each one of them is obsessed with what's happening outside the Lahore High Court? उनके commuting costs हैं, उनके rentals हैं, उनके बच्चों की तालीम है. Everything is going through the roof. If nothing else, no, I was thinking जैसे इंग्लैंड में जब हार्डशिप शुरू हुई ना, तो almost every channel started going to money experts, how to save, how to get cheap deals, how to buy, I don't know, groceries for your children for a smaller amount of money because your budget is shrinking. How to, because हम भूल जाते हैं कि हमारा काम ऑफ कोर्स न्यूज रिपोर्ट करना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और रेंज ऑफ ओपिनियंस देनी है, बट हमारा काम इन्फॉर्म और एजुकेट करना भी है. लोगों की मदद भी करनी है, उनकी रहनुमाई भी करनी है. मैं किसी प्रिटेंशियस सेंस में नहीं कह रहा कि ये तो सब जाहिल अनपढ़ लोग हैं और हम उन्हें हाथ पकड़ के जिंदगी, नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है, फरीजा है एक्चुअली, कि उनकी रहनुमाई तो करें ना. उनके लिए a lot of people who face such hardships, उनके पास तो यार सुबह से शाम तक शहजाद वक्त ही नहीं होता सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का. अगर आप उनको घंटे में, ये शाम में सर्कस की बजाय जिसमें एक इधर से चीख रहा है, एक उधर से चीख रहा है, एंकर पहले मुस्कुरा रहा है, बाद में कह रहा है नहीं नहीं इस तरह की बदतमीजी ना कीजिए, ये ना कीजिए. इट्स एब्सोल्युटली पॉइंटलेस जर्नलिज्म, बट इट्स डन बिकॉज इट्स कन्वीनियंट. 4-5 लोगों को आपने इकट्ठा किया. अच्छा, और अब तो ये कि इट्स नॉट जस्ट आउटसाइडर्स, वो 4 पहले आपके प्रोग्राम पे आ गए, फिर वो 3 उसमें जुड़ के मेरे प्रोग्राम पे आ गए, उधर चले गए. आई मीन देयर वर्दी कॉलीग्स, मैं उनकी खता नहीं बता रहा, लेकिन जो चैनल्स, for whatever budgetary reasons, they're not hiring reporters to go out in the streets and package material. NLEs नहीं होंगे, I'm sure. बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, मुझे पता है 4-4, 3-3 वो नॉन लिनियर एडिटर्स के साथ काम करते हैं. और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मीडिया आई बॉल्स तो होंगी क्योंकि इश्तिहार आते हैं, लेकिन वो मेरे नजर में that is not indicative of the influence of the media. That is just a noise that everybody's got used to, and they use it in their living rooms, all evening. देखो, irrelevant हम यूं होते जा रहे हैं कि ये जो अब यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की जो अनट्रेन्ड आर्मी है ना, they are dictating the agenda now. They are influencing people, and they are very poorly informed. And not just poorly informed, I think they all have political agendas as well. तो वो सच झूठ, अभी ये कल परसों ही की बात है कि वो तुर्की में कह रहे थे कि तुर्की की इमदाद वापस कर दी. I mean, and some anchor picked it up, etc. Now, my whole point of view there is that I think, देखो, ये कहना तो बड़ा आसान है कि हाय 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 हम मजलूम हैं और हमें ये कर दिया और जनरल फैज ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन आपने अपनी जो बेसिक यानी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को इन्फॉर्म कीजिए. इंटरटेन तो आप बहुत कर लेते हैं, वो सीरियस कंटेंट में भी आप इंटरटेन ही करते हैं, उनको इन्फॉर्म नहीं करते. लेकिन आप ये तो बताइए कि मुल्क में हो क्या रहा है. एंड नॉट जस्ट दैट, आई पर्सनली थिंक इवन पीपल से कि ये इकोनॉमिक्स बड़ी मुश्किल चीज है और इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है. But, I think people have a right to know why their fuel is costing what it's costing them. Why are they really struggling to feed their children?
I think it's the most basic right of a media user. और हम जो है वो अपने आप को इरेलेवेंट करते जा रहे हैं कि चार सियासतदानों को बिठाओ और उनको चिखवाओ और वो पूरी शाम 7 बजे से 11 12 1 बजे तक पूछो. आई थिंक And हम I कभी and कभी I was on that. बोलिए. कभी कभी हम ज्यादा क्रेडिट देते हैं इवन जब हम तनकीद कर रहे होते हैं कि ब्रेड एंड सर्कसेस कर रहे हैं हमारे साथ, अब तो इनके पास हम्म, ब्रेड भी नहीं रह गई देने के लिए, सिर्फ सर्कस ही रह गया है. बट आई डोंट थिंक इट्स बाय डिजाइन. आई थिंक द आई वुड लव योर ओपिनियन कि इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम कि जो सारे चैनल्स हैं उसके ओनर बिजनेसमैन हैं. तो वो उनका इंटरेस्ट, जो आप बातें कर रहे हैं मीडिया को जो करना चाहिए इन चीज़ों में, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है. तो अगर दो सियासतदान को लड़ाकर रेटिंग्स आ रही हैं तो वो पागल हैं कि वो हम्म. बैठ के समझाएं कि क्यों फ्यूल महंगी हो रही है और मसला क्या है. नहीं, आप सही कह रहे हैं. देखो, मीडिया ओनरशिप जो थी ना, वो मुशर्रफ को लोग क्रेडिट तो करते हैं, वो कारगिल से स्पूक हो गए क्योंकि कारगिल में आपके पास कोई प्रोपेगेंडा टूल नहीं था एंड द होल इंडियन प्राइवेट मीडिया वाज गोइंग कंप्लीटली गंगो. आई थिंक Also इट वाज प्योर. the plane that was hijacked, जिसमें पाकिस्तानियों ने इंडिया का प्लेन हाईजैक कर दिया था. यस यस, वो जो क्या था, इंडियन एयरलाइंस 184, वो जो वहां जी गया जी था, जी. कंदाहार. कंधार. जी. Kandahar from Kathmandu, I think. So the point I'm trying to make is कि अब आपने मीडिया खोल दिया, उसमें एंट्री आ गई. नाउ everywhere of course there's commercial interest. जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं यार, देखो ना, उन्होंने भी बॉटम लाइन तो मीट करनी होती है. I don't begrudge anybody who tries to have a sustainable media organization because you have to. लेकिन अब जो हो रहा है, और it's very sinister and it's very sad. If you look at, say, for maybe 1.5 2, they are not interested in making money of the media or even being a credible voice. They just want it for clout. They just want a club in hand कि जिससे उनका जो और कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो हाउसिंग स्कीम है या वो सिगरेट बनाने का कारखाना है या वो घी बनाने का कारखाना है या वल्लाह आलम, आप यू टेक योर पिक बिकॉज ऑल सॉर्ट्स देयर इन द गेम. They just want clout and they want a seat at the big table. अब जाहिर है अगर आप किसी बड़े चैनल के मालिक हैं या ये हैं, तो आपको सीट एट द टेबल तो मिल ही जाती है ना. व्हेन यू कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट, सेइंग मैं फलानी यू नो दुनिया का या एक्सप्रेस का या जियो का या डॉन का या व्हाटएवर चैनल, और भी पता नहीं बोल का, इसका उसका, और मैं चेयरमैन हूँ या जो भी उनके ओहदे होते हैं, तो आपकी बात तो सुनी जाती है. इसलिए कि इन इवन द, हाउ डू यू कॉल इट, इवन इन द शेकी watered down version of the democracy that we have, after all, politicians have to, even the most powerful institutions try to control and manipulate the media. you know अब आप ये देखो कि ये कितनी सिनिस्टर चीज हुई कि 2016 से ना, जिस तरह से मार मार के या कोऑप्ट कर लो या सबड्यू कर लो या तोड़ दो उनकी वेल, उनको काम नहीं करने दो, और एक आर्मी क्रिएट करो, through internship program of these TikTokers and social media. And they so reflect the mindset of one man then. I don't want to go into names, but I can tell you that petty mindedness ke, no holds barred, ma ban ek kar do, demonize kar do, ye kar do, wo kar do. वो अंग्रेजी का एक फ्रेज है, I will save the last word, but now that kind of genre that they created, is biting them in the backside, और अब उनको समझ में नहीं आ रहा. अब वो 4 4 5 5 साल की कैद की सजाएं सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. And short sighted, because if your view was to demonize without cause, without reason, without any substance, politicians that you didn't agree with, for example, or you wanted more favorably attuned chunks of the support base for one politician or the other, आपने उनके डीएनए में जमहूरियत तो नहीं डाली. अब मैं आपको बताऊं ना, आई एम एन इकोनॉमिक्स मेजर, यूनिवर्सिटी छोड़ के आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर गो बाहर इकोनॉमिक्स पढ़ो या कोई एमबीए करो. And I got an opportunity. I chanced into journalism, and then I so liked it because I thought, there's just so much you could do. It of course it's at a personal cost. I mean, I'm not being ungrateful. I've done very well compared to a lot of far more able colleagues in Pakistan, and I can still afford to pay the bills, etc.
बट यार 40वें साल में अभी भी आई हैव टू वर्क टू बी एबल टू, आई मीन आई स्टार्टेड इन 84, so I'm completing 39 years in next month, and then I'll be in the 40th year in journalism. हम्म, And some people say, okay, oh, why don't you travel and retire? I said, I mean, just tell me a way to pay the bills and I will. I'll probably die with my boots on, unless I win the lottery. ये And for that, I may have to buy the ticket. हाँ, So, so, and the truth is that एक जमाने में लोग आते थे, जब हम आए और एक पूरी जनरेशन आई, और हमसे पहले भी यार बहुत, हमसे तो पहले और बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, from 47 onwards. They didn't come into the profession for glamour. They didn't come into profession for clout. They just wanted to make a little tiny difference. And I think, मैं अपनी जर्नलिज्म की आपको अचीवमेंट बताऊं कि मैंने कभी इसको अचीवमेंट नहीं समझा कि मैंने किसी सदर या किसी डिक्टेटर के साथ बदतमीजी कर दी या सख्तदारियां लिख दी. If what my paper wrote or what I wrote made a difference to the life of one person, literally one person, जिसका पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है ना, जैसे किसी को पुलिस थाने में मार रहे हैं, उसकी आपको कहानी पता चल गई और आपने किसी को फोन कर दिया because of the access you have, and किसी के जुल्म नहीं करो, जाती नहीं करो. And I think that access even to the officialdom you get via media, I mean some people use it for their own purposes. हम्म, लेकिन मुझे तो यकीन करो, जो एक आध दो चार जिंदगी इस तरह के वाकयात हुए, I thought, okay, it was worth whatever, we had to forego in terms of comfort, so etc. etc. इसमें वो बियॉन्ड गुड एंड बैड, आई थिंक वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर अब इस तरह का बन गया है कि एक तरफ अगर आप एक यंग जर्नलिस्ट हैं तो आपके पास रहा है कि जो हो रहे हैं जुल्म उनके खिलाफ लिखो, अपनी ज़िंदगी रिस्क करो. शायद कराची में फिर भी थोड़ी बहुत प्रिविलेज हो, अगर आप बलूचिस्तान में एक रिपोर्टर हो और लिख रहे हो तो आपके साथ क्या ही होगा. दूसरी तरफ आपका ऑप्शन है कि स्टेट नैरेटिव आप गल्प डाउन कर दें, बिल्कुल फिफ्थ जनरेशन वॉरियर बन जाएं, जिस तरह उनको ऑप्शन दिया गया था. आई मीन देयर वाज दिस किड कॉल्ड मखदूम शहाब, इज रियली यंग, और उनकी Yeah. तस्वीरें आती थी फुल आईएसपीआर के साथ, हाथ मिला रहे हैं हाथ और हाथ वो में ला रहे. गुन गा रहे हैं. और फिर उन्होंने रिसेंटली जब हुआ अप्रैल में, तो उन्होंने फिर माफी भी मांगी पब्लिकली, एंड टू क्रेडिट टू दैट किड. आई मीन लोग कभी कभी समझते हैं कि अनसेवेबल हैं यूथ के जो मेंबर्स हैं, लेकिन जब 16-17 साल आपका दिमाग में भूसा भरा जाएगा तो ऑब्वियसली गार्बेज इन गार्बेज आउट. एंड ही अपोलोजाइज, ही वाज लाइक ओके नाउ आई सी व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट इज फॉर. लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता इमरान खान वापस आ जाते हैं तो वो वापस बदल जाएंगे. सो दिस That's, दिस दिस देखो ना ये, इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर नहीं, देम but कि यार मैं या तो this लड़ूं is, हाँ. या मैं इनके साथ मिल जाऊं, और फिर इमरान रियाज खान जो कहता है कि हाँ मैं तो महीनों में करोड़ों कमा लेता हूँ, सो यूर हाँ. लाइक मैं पागल हूँ, मैं क्यों जाऊं उस रास्ते. नहीं नहीं, बट यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि, लेकिन देखो ना, एक एक फंडामेंटल कैजुअलिटी तो हो गई ना. आई डोंट केयर विच साइड दे आर ऑन, और वो कौन इमरान वापस आ Yeah. जाए, उनके साथ चले जाएं या भी गाली दे दें, रिगार्डलेस. मतलब what contribution to the pool of news, to the world of journalism, to the world of having informed decision making in the country have they made? Zilch, zero. I'd be pretentious to say that I've made anything bigger than zero, but I'd like to believe maybe a 0.1 more than they have, in my 40 years of beating about. But मैं तुम्हें बताऊं, it is bizarre that I was in Karachi University from 80 to 84. That's when I started work at dawn because I needed to, while I was still in my final year at the university. और यकीन करो, हमें मारे पड़ती थी, मुझे जाती तौर पे नहीं, लेकिन जो बाएं बाजू के कहलाते थे, when we used to say कि ये भाई आप ये अमेरिका का जहाद नहीं करो, यहाँ ये गले पड़ जाएगा. And Islamic Jamiat al-Talaba then was empowered to crush any dissenting voices by the Zia government because they believed in the Islamic Jihad, and I think Zia found it very convenient to tag them on, etc. और अब आप मुझे बताइए कि उसके 40 साल बाद, आज जो वो करने वाले हैं वो भी कहते हैं कि हाँ यार, देयर वाज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद दैट, है ना. लेकिन मेरी जनरेशन या मेरे कंटेम्प्रेरीज रोने के अलावा कुछ कर सकते हैं कि जब आप when you could have done something about it, तो उस वक्त तो जो बोलता था उसको आप जूतियां मार देते. I was just hearing Manzoor Pashtine somewhere, he was addressing the Karachi Bar Association, and he said कि मुल्क में हमने फकत अमन की बहाली का मुतालबा किया और कुछ नहीं किया.
तो हम मुल्क दुश्मन है, दुश्मन तो मुल्क का इंतशार फैलाता है, हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन अमन की बात करें जिस वक्त वो किसी की स्कीम ऑफ थिंग्स में ठीक ना हो। मतलब देखो ये फंडामेंटल फ्लॉज है। और मैं बताऊं शजा, आपका मीडिया बहुत भी जिम्मेदार हो और अपनी जिम्मेदारी से ओहदा भरा हो, अब मे बी आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ द फाइट, अलाउ मी दैट लिबर्टी, बिकॉज आप लोग यंग हो। मैं आई 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 एम इवन टुडे आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। लेकिन पता क्या है यार, थक जाता है लड़ लड़ के आदमी, ऐसे इंक्लाइन पे चढ़ते 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 कमर दुख जाती है कि कितना लड़े। और पता है क्या, आई फील वेरी डिस्पोंडेंट ऑफ लेट, वेरी डिस्पोंडेंट, बिकॉज यू नो हम लोग वी प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन इन द कंट्री लाइक एनीथिंग। ये फिगर्स देखोगे 2030 तक कितनी आबादी हो जाएगी, 35 तक कितनी हो जाएगी, ना हमको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन देने की हमारी हैसियत है और ना डिजायर है। डिजायर भी नहीं नजर आता। उनको आप तालीम नहीं दे सकते, उनको आप सेहत की सहूलतें नहीं दे सकते। व्हाट आर्मीज आर यू रेजिंग? फिर आप यही करोगे ना कि वो इसको लिंच कर दो, उसकी इबादत गाह पे हमला कर दो, और उनमें जो जरा शार्पर वाले ब्राइटर लॉट्स, वो they'll be open to becoming TikTok stars because that's a good way to make money and whatever they say sells। मतलब देखो, हम लोग आए तो हम किसी जर्नलिज्म एकेडमी से नहीं आए थे, लेकिन उस जमाने में ना दो चार छोटे छोटे अखबार के न्यूज रूम्स होते थे। they were academies, we were put through the mill। हमें किसी ने पहले दिन नहीं कहा टाइपराइटर लेके स्टोरी लिखने बैठ जाए। I worked a couple of years on the news desk before I was moved out and started reporting। और अब वो बीबीसी को कितनी भी गालियां दें, मैंडेटरी ट्रेनिंग 2 to 3 weeks on arrival in every year as a senior manager, as a member of the management board, I had to do 5 training days a year that was rotated in। I mean there was no escape from that। अब यहां मुझे अब बताइए कि लोग मेन स्ट्रीम 8 9 10 बजे 8 घंटे का 6 दिन 7 days a week they do programs। I promise you कि थियोरेटिकली तो यकीनन किताबें किताबें पढ़ ही लेते हैं जर्नलिज्म की, पर हाउ मेनी ऑफ दोस ट्रूली प्रैक्टिस एनी कोर जर्नलिस्टिक वैल्यूज? कि मतलब एक छोटी सी बात है, मैं शाम में देखता हूँ, आई वांट टू पुल माय हेयर आउट कि यार खबर खबर है, उसकी अपनी सैंक्टिटी है और ओपिनियन ओपिनियन है। एंड आई एम अ वेरी ओपिनियनेटेड मैन, मतलब मैं किसी को भाषण नहीं दे रहा कि ओपिनियन गलत नहीं, एवरीबॉडी हैज द राइट टू एन ओपिनियन एंड टू एक्सप्रेसिंग इट नो मैटर व्हाट इट इज। बट पता है क्या, व्हेन आई स्टार्ट confusing either deliberately, which is criminal, or just laxity, I start confusing the two। I cannot differentiate between news and opinion। गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर योर ओपिनियन ऑल्सो बिकम्स न्यूज, माई ओपिनियन, एंड अगर डाइवर्जेंट है तो आप मुझे बताएं कि ऑडियंस को क्या मिल रहा है। उसको दो चार खबर के एक्सक्यूज मी वर्शंस मिल रहे हैं, और उस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं करूं क्या इसके साथ। फिर वो कहता है आप चोर हैं, आप लिफाफा हैं, क्योंकि आप एक दिन एक बात करते हैं, एक दिन आप एक बात करते हैं। I mean, okay, the demonization of the media also was part of that, kind of sinister plan। But I must also say that some of the sobriquets we weren't ourselves, because अब जैसे मैं बताऊं, मुझे वो आपके ये अभी जो आपने ऐलान किया ना ट्विटर पे, तो किसी ने कहा कि इनकी वैसे तो साफत लिखी हुई और इनके जमाने में अखबार एक था, आजकल ये सोशल मीडिया पे किसी एक पार्टी है इससे बड़े तंग है। And I reflected on that comment, and I said that's true, because there's just so much bile and so much vile stuff on social media that आप फरिश्ते तो नहीं है कि आप उससे बिल्कुल मुत्तकी बन के उससे दूर हो जाए। I mean you have to be affected by it। Now how you react, you can, I mean I'm human, and I'm sure I've often behaved stupidly, reacted। बट वही बात, निगेशन आप नहीं प्रूव कर सकते। अब जिस तरह आप सोशल मीडिया पे अब एक पूरी पार्टी लगी हुई है कि ये देखो ये पीपीपी पीएमएलएन का बंदा है, अब मुझे लोग बोलते हैं तुम प्रूव करो कि तुम नहीं हो। अब मैं किस तरह प्रूव करूं यार? नहीं मैं बोल नहीं, सकता और हूँ ना, मैं मैं बोल सकता हूँ, मैं उनको नहीं, गालियां दे सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ? अब मतलब तुम हो एग्जैक्टली तो नहीं, तो बंदा। मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं वो मैं सैटरडे को संडे को मेरा कॉलम आता है काला है, इत्तेफाक से उस पे I've written about India। I write once a year on India, and वहां भी वही हाल है वैसे, बाय द वे।
so much hate mail came that how dare you, your country is a mess, etc. I said, 50 out of 52 weeks, 51 I write about the mess in my country. You're not bothered to read it. I'm entitled as a journalist. You're not superior beings who's somewhere up there that I can't talk about you. अब जो है ना वो अपना एक कोट पकड़ के कहेगा ये तो फलानी पार्टी के फलाने. I mean, they will not say how savagely we have talked about every political party. When they are wrong, and why shouldn't be? It's a beholden responsibility. किसी पे एहसान नहीं कर रहे, लेकिन वो इस पोलराइज वर्ल्ड में ना, अब मैं आपको बड़े लुत्फ की बात सुनाऊं. जब वो एक पेज था ना, तो this is another part of my life that you may not be aware of. जब वो एक पेज था, तो जो कुछ हो रहा था, तो I would often my wife was Spanish. I mean, she also used to work for the BBC at one point in time, was in stitches. She says, you say the most outrageous of things, but I love you because I find them so funny. तो वो किसी ने, मतलब आप टोन और टेनर देखे ना, तो कहने लगे कि literally, I'm telling you in direct quotes, you seem to have it in for the army. I'm sure in years ago, some army soldier visited your mother and did something wrong. That's why you are so badly inclined. I said, well, the only army soldier who visited my mother married her in 1945, and they were married together for the following 30 years, and they both, sadly in my teens, both died. They were very young when they died. So I said, yes, my father was in the army, and he took premature retirement ahead of 71, and we moved to Karachi then, and that's pretty much where I grew up. I was, less than 12 years old then. So but the point I'm saying is, I said you're absolutely spot on, but it wasn't for one night. She spent her whole life with a soldier. लेकिन मसला कहने का ये कि अब अगर ये आप टोन और टेनर करोगे, तो किसी वक्त तो कोई आपसे पटाख करके जवाब देगा ना, क्योंकि I don't think I owe niceties or courtesies to any idiot who's abusing me. आप डिफर करें, आप क्या आपने ये लिखा है या गलत लिखा है, आप motives attribute करते हैं. How in the world do you know how I have paid for the education of my children? My elder daughter's now gratefully finished. She's a doctor. She's just started working in England. And, the younger one, wo hamari, she came into this world to keep the father young. So she's doing GCSEs this year. And people have no idea. बस कहने को तो बड़ा आसान है भाई, अगर लिफाफे ही हैं सबके पास, why would I even be bothering to write a column, या मैं कभी इधर कोई न्यूयॉर्क टाइम्स वाले कह देते हैं वो लिख देता हूँ. सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ऐसे तो नहीं, you don't produce this stuff without thinking. इसमें मैंने बहुत एक आसान एक रूल बनाया हुआ है. अगर कभी मुझसे आके कोई इस तरह की बात करे, आई एम लाइक, व्हाट डू आई नीड टू से टू कन्विंस यू? If there is nothing that I can say to convince you otherwise, then your belief has no merit. अगर ये है कि यार, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं तुम हो क्योंकि तुमने ये नहीं बोला, और फिर मैं उनको लिंक भेज देता हूँ उस पॉडकास्ट की, तो वो कभी कभी बोलते हैं ओ शिट सॉरी मेरी गलती है, बिकॉज दे आल्सो सी अ मिलियन ट्वीट्स, तो वो कंफर्मेशन बायस भी हो जाता है. अब जैसे फॉर इंस्टेंस पीपल, बिकॉज मैं सिंधी हूँ, लोग बोलते हैं पीपीपी सपोर्टर है. पीपीपी ने मलिक रियाज से मिलकर सिंधी गांवों पे जो कब्जा किया, हमारी पॉडकास्ट के अलावा कोई है ही नहीं हु वुड डेयर रिपोर्ट ऑन दैट. इमरान रियाज खान टाइप पीपल, जो मतलब वो ये बोल सकते हैं कि जरदारी माँ बहन टू 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 व्हिच गेट्स द क्लिक्स, बट जो एक्चुअल मलिक बातें रियाज वो को नहीं ऑफेंड करेंगे ना, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते भाई. देखो ना, डॉन ने मलिक रियाज पे फ्रंट पेज, और they consistently do it, but do you understand the price they have to pay for it? The price they have to pay for it is a serious struggle, because he's one of the wealthiest advertisers in the country. और आप देख लें, ये बड़े बड़े DGISI की जो तस्वीरें attempted murder charge पे flash करते थे, they don't write a word on Malik Riaz, not a word. I'm talking about the biggest news group in the country. Now, तो I think he owns a large portion of Express. I'm told. हाँ, तो ठीक है भाई, वो अगर
वो मियां आमिर कर सकते हैं और लखानीस कर सकते हैं, और वो आई डोंट नो 92 कोई और है, और कोई घी वाले हैं, और कोई टेक्सटाइल वाले हैं, तो व्हाई नॉट, आई मीन ठीक है। एंड वो भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ किसी किस्म की लाइसेंसिंग में या ओनरशिप में कोई एथिकल, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज कौन कंसिडर करेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ ऊपर से नीचे तक किसी ने सुना ही नहीं हुआ। आई स्वेयर आई वाज एडिटर डॉन, बिलीव मी। जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मुझे अपार्ट फ्रॉम रिसेंटली ऑन ट्विटर एक्सेट्रा कोई एक आध ने कोई लिफाफा कह दिया, वो भी पासिंग में, मैं कोई रेगुलर लिफाफों की लिस्ट में नहीं आता, तो मुझे कोई चोर नहीं कहते, लेकिन पागल मुझे हमेशा से एक रेपुटेशन है कि इज अ बिट ऑफ अ नट जॉब। पीपल हैव कम टू मी एंड सेड, ओ यार, वो अपने बच्चे ने ये कि मैं, यार मैंने कहा प्लीज डोंट से दिस, बिकॉज आई नो यू, इट डजंट बिकम अ स्टोरी, यू नो। और अगर मेरिट पे होगी तो भेज दो, दफ्तर में आएगी, वो असेस होगी जैसे सबकी असेस होती है, एंड हो जाएगी। लेकिन I mean, Shahzad, I'm very scared of sounding arrogant and जैसे कोई मैं बड़ा तीस मार खान हूँ. I'm a very humble man. I measure my 39 years in journalism and literally, teaspoonfuls of 3 or 4 achievements, और वो भी किसी की अगर जिंदगी वो हो गई, लेकिन जो फेजेस देखे ना, फ्रॉम आउटराइट जज मार्शल लॉ, देखो एक मैं छोटी सी बात बताऊं, द वर्स्ट देन वाज कि जीप आएगी, वो आपको ले जाएंगे और किसी फौजी अदालत में आपको कोई सजा सुना देगा, कोड़े मारे नहीं मारे, आई हैड अ पोलियो एंड डिसेबिलिटी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि शायद कोड़े ना मारे के मर मर आ जाऊंगा, तो फिर और गले पड़ जाऊंगा, तो एक्सक्यूज मी, पार्डन मी। तो and then we saw the next phase, which was, when Benazir, I covered her campaign. I was working with Muslim then, and my editor then, Jafar Naqvi Saab, he said, look, she's a national leader and nobody covers her. Nobody. I'd left on to join the Muslim. तो मैंने कहा सर ठीक है, I mean, I totally agree, she's a democratic leader and I knew her, तो मैं I covered her, etc. लेकिन आपको मैं बताऊं, as far back as then, so he covered the election, covered her victory, Muslim killed my story that it was bizarre. I wouldn't say who was where in this, but अजीब dynamics होती है ना, कि वो 88 इलेक्शन से पहले Kamran Khan did a focus on, excuse me, Karachi and Hyderabad, I think, where he said that MQ was looking very strong, which was fine. यार, मेरे तो अखबार के पास और मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, वो मेरा उसको जजा मिले, one of my cousins who ran a construction company was doing a project in Jamshoro, तो उसने मुझे कहा कि यार तुम सिंध का अगर चक्कर, उसको भी बड़ा शौक था, वो भी ही इज अ बिट ऑफ न्यूज एंड सियासत ठरकी, तो उसने कहा तुम आ जाओ, आई गोट अ जीप शीप, हम लोग घूमेंगे थोड़ा, देखेंगे 3-4 दिन। सो आई ट्रैवल्ड by bus to the adda and he picked me up from there, and we traveled, उस जमाने में, यानी फ्रॉम ठारूशा, जहां वो न्यू जतोई वाले मुझे कह रहे थे कि ना जाओ ठारूशा की तरफ, वहां बड़े डाढ़ेल हैं और शाम का मगरिब का वक्त है, what they didn't want me to see was, how many people Zafar Ali Shah had around him, then, because he was then People's Party, and then we went into Sakhar and Ladkana and Khairpur and this side of the Indus and that side, etc. And I came and I started writing. I did a series. I said, look, straw poll hai. I'm not saying this is a scientific poll, but I was the first person to write that people like Pir Pagaro, Ghulam Mustafa Jatoi, Nawab Sultan Khan Chandiyo, these big names, उसका क्या नाम था, आफ्ताब शाह जिलानी थरपारकर में, I said none of these big names are assured of a victory. So, I walked into the press club and one of the press club titles, then I won't name him, he said, oh, so आपने अपना पीपल्स पार्टी की लॉयल्टी दिखा दी। मैंने कहा यार, आप घर से प्रेस क्लब आते और जाते, मैंने 3,000 किलोमीटर 4-5 दिन में सफर किया, कुछ तो क्रेडिट दे दो यार, पूरा कलर लिखा हुआ है कि मैं कहाँ गया, कहाँ से मैंने बात की, किससे लोगों से बात की। मैं तो आपको बताऊं, आपका तो सिंध, मेरे भी सिंध की धरती से बहुत प्यार है। लिव्ड इन मीरपुर खास एज अ चाइल्ड फॉर 4 years, बिफोर मूविंग टू नाजिमाबाद, एंड आई टेल यू, न्यू जतोई में
जो कॉम्प्लेक्स है जतोई फैमिली का, शहजाद 88 की बात बता रहा हूँ, उसके बैक वॉल के साथ एक झोपड़ा था, हाँ? और झोपड़ा एक दरख्त के नीचे था, एंड कैन यू इमेजिन उस दरख्त के ऊपर जो था ना, पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ। I mean, talking about 88, I'm not a fan of People's Party. I'm just telling you what informed my reporting. तो वो झोपड़े से लड़का निकल के आ रहा था, मैंने उसको रोका, मैंने कहा यार ये तुमने, जतोई साई का इधर घर है तुमने, एंड गुलाम मुस्तफा जतोई was a decent man, you know, a very meek man, but his brother Ghulam Mushtaba Jatoi was, you know, was a toughie of the area. So I said तुम्हें, तो उसने जो लैंग्वेज यूज की ना, उसने कहा साईं ये कर्ज है, ये हम अदा करेंगे और जो हमें रोकेगा उसको हम यहाँ गाड़ देंगे जमीन। I thought, wow, I mean, this guy, if he's this defiant, he's not going to go and change his mind at the ballot box, will he? It's impossible, you know. पीर जो गोट में गए, पीर जो गोट में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीर साहब पगारो, झंडे वंडे नहीं लगे थे, लेकिन जिससे भी बात करो ना तो वो बोलता था अब देखेंगे, you know. And in the end, that young Parvez Ali Shah beat him in his own constituency. So all I'm saying is कि वो फेस देखा, और उसके बाद फिर बेनजीर का जाना देखा, और उसके बाद जो MQM और जाम सादिक अली और इरफानुल्लाह मरवा, तो वो ट्रायम्विरेट देखा। उस जमाने में जफर अब्बास वाज बीटन अप वेरी बैडली इन हिज हाउस। I was just very lucky because the day after वो कामरान खान को भी किसी ने स्टैब किया था द न्यूज के दफ्तर के बाहर। he had a massive cut in his arm. He was leaving and somebody came running, grabbed his arm and just cut it like that. So anyway, I came home and I remember I used to live in my sister's house. She was widowed, very young. उसके 2 छोटे बच्चे थे, तो I used to stay in their house. तो वो उनको सुबह स्कूल लेके जाती थी and then she would teach. And I got a call, said Abbas Nasir साहब, मैं कहा जी हम एक्सचेंज से बात कर रहे हैं, डायरेक्टरी से आपका बस नंबर कंफर्म कर रहे थे, ये बंद कर। अच्छा, something about that, I was still groggy and sleepy because हम रात को 12-1 बजे तक काम करते थे. This is 8 o'clock, 9 o'clock in the morning. While I was having my cup of tea, I said, the phone directory people can't be calling me because the phone's not in my name. They've assumed that since I'm a journalist, it's my sister's name. यकीन करो, मैं अपने पिजामा से जूते वूते पहन के ran down to the car. I started it, और उससे कोई 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ armed robbery हुई थी, where they held a gun to my temple for an hour and almost suggesting like कि तुम बड़े अपने आप को तीसमार खान समझते हो, this is your reality, in your own home. your cheek to the floor और ये वो, and they cleaned out the house. And my regret was मेरे पास तो कुछ था नहीं, मेरी बेचारी widowed sister का जो भी थोड़ा बहुत rings and a little pendants and this and that, jewelry ले गए थे, and all political as I found out later, but it's water under the bridge, अब उसकी क्या बात करें। तो वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने वो सिक्योरिटी फर्म चलाते थे, उन्होंने कहा कि यार एक गार्ड, मैंने कहा भाई आई कांट अफोर्ड टू पे फॉर अ गार्ड। उनका यार महीने 2 जब तक वो है, लेट मी टेक केयर ऑफ इट, फिर देखेंगे। तो मैंने उसको आवाज दी, वो पता नहीं बाथरूम में था, आई जस्ट गॉट डाउन एंड आई गॉट इन द कार एंड आई लेफ्ट, एंड देन एंड आई वेंट to my brothers who used to live close by, and then my sister arrived, and she was completely white in the face, and she says, "Kaun the wo log, kaun aaye?" So I said, "What happened?" She said, "Well, I dropped the kids to school, and when I came home, तो मुझे उसने जो भी लड़का वो गार्ड था उसने बताया कि there were 8 people on 4 motorcycles with guns in their waistbands, और वो कह रहे थे किधर है, उसको कौन नीचे है, तो उसने कहा वो तो कहीं है नहीं घर, उनकी गाड़ी नहीं है, चले गए। तो मतलब ये फेस देखा कि from the fear of a structured military jeep coming picking you up, and at least सबको पता तो था ना कहाँ है, कौन है, मारने वाले का भी पता था, आइडेंटिफाइड है। उन लोगों को तो मारने वाले का क्या पता था। जफर को जब मारा उन्होंने, तो अजीम तारिक मरहूम केम ऑन रिकॉर्ड टू से हमने तो नहीं मारा, वो तो शिया, उनको तो किसी लश्करे वो व्हाटएवर लश्करे जंग, एंड एवरीबॉडी न्यू दैट वाज नॉट देयर मोडस ऑपरेंडी। वो किसी के घर में जाके मार लगाने का उनके पास टाइम नहीं होता था कराची में। ओनली पीपल हु कुड डू दैट वाज हु। एंड देन
that was one phase, and then in 94 I left, in 2006 I came back. Obviously I came back in different circumstances, लेकिन फिर रिपोर्टिंग के प्रेशर्स खत्म हो गए थे। हाँ, जब वो हमारे एस रिपोर्टर ने स्टोरी की, तो ही कॉल मी एंड ही सेड कि मुझे एमआई वाले बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं जस्ट वांट टू डिस्कस योर सोर्सेज एटसेट्रा। सो आई सेड प्लीज टेल देम दैट my editor is mandated, I'll lose my job if I talk to you. Please come to his office. He'll join the meeting and, be happy to, see what we can share with you and what we can't. लेकिन ये किसी के दफ्तर में नहीं जाओगे। तो खैर, they lost interest. And then, of course, there was the 4 years, Bukti and the Balochistan thing. And the truth is, I think what irked them, बिकॉज हमें देख के फिर और अखबार वाले भी करते थे, तो इसलिए हमारी वो 8-9 महीने जो एडवर्टाइजिंग बंद हुई, वो इसलिए हुई कि आई एम टोल्ड दैट अदर न्यूज़पेपर्स, व्हिच वर फीलिंग अ लिटिल probably small for not really fighting the battle, were then going back to them and saying कि देखें जी, वो डॉन वाले जब लिख देते हैं तो हमारे क़ारीन जो है, पढ़ने वाले, उनको शिकायत होती है, ये होती है। But they were still, I would still say that compared to what my other colleagues have gone through, and life and limb, और कौन उठा रहा है और कौन क्या कर रहा है, and of course the naked aggression of the intelligence services, वो 2010 तक नहीं थी। हाँ, I'm not naive, वो थी, but that was confined to Balochistan and Fata. They were clever enough not to try that in major urban conurbations, because then that would have focused attention back on them, So that was very cleverly. I don't think there was any benevolence involved there. I think it was simply a matter of, courses for courses के वो क्या कहाँ काम चल सकता है। लेकिन उसके बाद जो पिछले सालों में हुआ, और उसका सबसे बड़ा जो मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से लॉस हुआ ना, वो ये हुआ कि पाकिस्तान में सहाफत उसकी कैजुअलिटी बन गई। अब अगर आप देखें तो एंड पीपल कैन से अबाउट यू, क्या पीपल्स पार्टी के, या मुझे कहो कि जी आप एंटी फलाने या प्रो फलाने, बट द ट्रूथ इज यार, हमारा इंटरेस्ट तो वो बेचारा जो नंगा भूखा है उसमें है। और and I've spent my whole time there. I tell people, when people used to attack me, I said, in between my 3 family members, one has died in uniform, and in between them they've fought like 5 wars. So please, don't tell me this, ये जो DHA dominated, plot dominated agenda, you don't get the right to tell me about patriotism, because my hardship today is because my father was a patriot, who preferred to leave rather than compromise on principles. And also, what he had in life, was मतलब ये कि ब्रेड टैब वाला कोई ऑफिसर जब फौज छोड़ता है, तो नाजिबाबाद में 400 गज के मकान में, अल्लामा इकबाल टाउन में HSBC को 300 रुपए महीने के किस्त वाले घर में नहीं रहता, And again, I'm not saying that somebody did a big favor to somebody, not at all. That is how it should be. But the point is कि जब मैं देखता हूं ना कि सहाफत कितनी सिस्टमैटिकली तबाह की गई है, that is like a stake in the heart, because then you question the rationale for all you've done and it's stood for your entire adult life, more or less, सो सर, ये कैजुअलिटी है या इंटेलिजेंट डिज़ाइन हम प्रिज्यूम करें? क्योंकि जिस तरह एसिड्स बैकफायर करते हैं अक्सर, कभी कभी मुझे क्वेश्चन होता है कि हम जितना क्रेडिट देते हैं कि इंटेलिजेंटली ये डिज़ाइन करके किया गया है, तो ये वाकई उस तरह हुआ है जिस तरह डॉन लीक्स की हम जिक्र करें। डॉन हैज़ ऑलवेज बिन, वेदर यू एग्री विद इट और नॉट, जिस तरह आपने कहा पेपर ऑफ रिकॉर्ड, कि भाई अगर एटलीस्ट डॉन में लिखा हुआ है तो स्पिन हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, बट वो फैक्ट तो है ना। अगर उसमें लिखा हुआ है 53 डेड, तो 54 हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इट्स नाउ कम टू अ पॉइंट वेयर हेडलाइन डॉन की आप अगर कॉपी पेस्ट करें, देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर विल बी लाइक ये तो डॉन कह रहे हैं ना, ये तो सच थोड़ी हो सकता। सो जो पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स के बारे में आपने भी लिखा, मैंने भी अभी एक वीडियो बनाई थी, ये जो हो गया है where even something that's printed as a headline in the news, उस पे भी लोग आर लाइक नहीं, ये सच कैसे हो सकता है? ये इन्होंने भी नहीं एंटिसिपेट किया था, या ये लोग यही चाहते थे कि बस वो यार ट्रूथ की अहमियत ही देखो, खत्म हो जाए? I think
for that you have to ask one question. हालांकि chaos जो है वो अपने आर्किटेक्ट्स को भी नहीं छोड़ता इन द अल्टीमेट एनालिसिस, अगर आप तारीख उठा के देख लें। लेकिन तारीख, हमारी जो सिस्टम जरीफी ये कि तारीख पढ़ता कौन है, सबक लेना तो बड़ी दूर की बात है। हमें तो रीसेंट यार परसों की बात नहीं याद रहती, तो हम तो पता क्या है कि देखो, आई टोटली एग्री विद यू कि कितना डिजाइन था, और डिजाइन का तो मकसद ये था ना कि भाई इनसे हर टियर पे, मीडिया में, सोशल मीडिया में, एवरीबॉडी शुड बी सिंगिंग फ्रॉम द सेम हिम शीट। यही यही मकसद था ना उस दबाव का। वो केओस उन्होंने बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन शुरू तो कर दिया। अब मैं आपको बताऊं ये बात, मैंने डॉन से ना पूछी और ना दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, आई मीन ही इज ऑन ट्विटर आल्सो, एंड आई कैन ऑफलाइन टेल यू हु ही इज एंड यू कैन आस्क हिम। ही इज इन एडवर्टाइजिंग इन लाहौर। तो आई वाज सेइंग कि यार डॉन पे इतनी सख्ती आई हुई है, 2-4 साल पोस्ट डॉन लीक्स। सो कॉल्ड लीक्स। तो you know can you help, like, yeah, I was just having a general discussion with him. I don't hold a brief for Don, I'm just a columnist freelance. तो वो कहने लगा कि यू डोंट नो कि कितना प्रेशर है, हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजर्स वांट टू एडवर्टाइज इन डॉन, एंड वी आर टोल्ड बाय द स्पूक्स के आप डॉन को इश्तेहार नहीं देंगे। तो ही सेज आई टुक अ रोबस्ट लाइन एंड आई से, देखिए जी, ये फलानी मल्टीनेशनल है और फलानी ये कंपनी है, तो इनको तो दे मैंडेट अस कि ये हमारा इश्तेहार है, फलानी जगह लगाओ, तो उनको भी बता दो कि उन्हें भी यही काम करना है, धंधा करना है, और हम भी यही हैं, ये बाकी सब आते जाते रहेंगे। अब दिस वाज द लेवल ऑफ कोएशन। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जहां उन्होंने ये देखा कि काबू में नहीं होंगे, वहां उन्होंने हमला बड़ा सिनिस्टर किस्म का उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे शुरू किया। अब मसला ये कि देखो, अखबार, television, you require a certain amount of skill, you require a certain amount of talim, you require a certain amount of just sheer number of hands. और जब वो सारे माशी जोर पड़ता है ना, तो वो सारे एरियाज कमजोर हो जाते हैं, और जब वो कमजोर हो जाते हैं तो एक उसका बिल्कुल डायरेक्ट असर ये होता है कि प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट है, जब ये प्रॉपर प्रोडक्ट का कटिंग एज है ना, वो थोड़ा सा ब्लंट होना शुरू हो जाता है। Obviously, because without an input, you can't create content out of the air. You need a certain number of hands to process it, report it, polish it, etc. And I say this for print and for television. तो जहां से उनको अंदाजा ये हुआ कि भाई ये तो बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्रिपल करना शुरू किया इकोनॉमिकली। डॉन को भी किया, और टू एन एक्सटेंट उस जमाने में जियो को भी किया, और अच्छा, और अब मसला ये कि अब ऑब्वियसली I think a revival in the short period was possible had we not had to confront with a dar disaster, as I call it, because ये जो 4-5 महीने का state of flux हुआ, देखो ना, I mean, okay, Mifta, I'm very fond of him. I never met him personally, but interaction, etc. He's a public finance Wharton guy, but I differ greatly with him on his free market prescriptions, and I also differ with him on elite capture, but resources have to be generated from all possible avenues when we are like this, and we have to talk about what we spend on defense and what sits under pensions, government pensions, a huge 650 billion rupee a year, kind of chunk. How much of that pension line belongs to federal government employees, where everybody is attacking babus and saying itne pension lete? अगर आप उसका ब्रेक डाउन देख लो, इट इज ऑल इन द बजट फिगर्स। को मुझे है से कि आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। तो वो उसको एड्रेस नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट ही हैड ट्राइड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये जो आए ना कि मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दे डोंट अंडरस्टैंड इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वो देखो, और मैंने ये अपने कॉलम में भी लिखा था, मैंने कहा देखो, द लास्ट व्हेन ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, US had a massive troop presence in Afghanistan.
Okay, they had always, a love-hate relationship with Pakistan, do more, do this, do that, but they didn't want GIs and Marines dying in Afghanistan because they were trying to, put tighten the screws on Pakistan. Do you understand what I'm saying? Yeah, yeah. Today we have zero leverage. I think the world has also gone beyond saying that you can't let us collapse because we're a nuclear power. You know, uh, God knows. I hope it doesn't come to that. But I truly feel that that वो जो going back to your question on the media, कि वो जो control chaos की उनकी ख्वाहिश थी ना, कि हम उसको सब ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, इसको दबाएंगे, इससे ये कहलवाएंगे, इससे वो कहलवाएंगे. That too you've seen, Shahzad, yourself. I mean, the Yep. TikTokers from Imran, Riaz Khan, and Makhdoom, and many others whom Yeah, yeah. I stay away from them. And नाम वाम ले दूंगा, फिर वो मेरे माँ बहने करना शुरू हो जाएंगे. तो ये ये तो है, बट अब मुझे अब लोग बोलते हैं देखो तुम बायस्ड हो, देन आई एम लाइक अच्छा आपको कौन अनबायस्ड लगता है, लाइक इमरान रियाज खान. अब मैं कैसे किसी से ये आर्ग्यू कर सकता हूँ यार, मतलब वो यार, अब पता है यही तो मसला है. देखिए, इसी चीज का तो मुझे लिमेंट था कि सहाफत का गला काट दिया, घोट दिया. उसकी वजह यह है कि जब एक सामे या कारी, पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला है, नाजिर, जब उसकी आपने यही एहलियत उससे ले ली कि वो ये बताए कि सहाफत है या नहीं है, या हम्म, ये ठीक है या नहीं है. और पता है इसका, ये पोस्ट ट्रूथ का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना, मैं आपको बताऊं. ये देखो, पाकिस्तान में तो इनिशियल तो था ना कि गेट नवाज ऑपरेशन, एंड इट वाज द विजडम इन द एस्टेब्लिशमेंट देन वाज के इमरान आएगा, एंड फॉरेन एक्सपैट पाकिस्तानी, they seriously thought, they believed all that वो पाकिस्तानी जो बिलियंस बाहर लेके बैठे हुए हैं और एक्सपर्ट्स, और वो आ जाएंगे. Some ex-Fauji telling me that he was quite shocked when he realized that uh, like that he came in and there was no economic plan, for 8 months or something. I don't know, was it 8 months? I don't remember now. That they sat around saying कि IMF से बात करनी है, नहीं करनी है, अच्छा है, बुरा है. And they said we found it shocking. So maybe the path to hell is paved through good intentions, लेकिन मसला ये हुआ कि वो तो आपने सारा कर दिया, वो तोड़ फोड़ करके एक एक डायरेक्शन पे ले गए. लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो आपके हाथ से स्पिन आउट कर गया. और आज भी मैं आपको बताऊं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, हाँ, जब तक हम्म, इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ व्हाइल. और आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स के 3 महीने में इंतखाबात होंगे. आई हैव नॉट ट्रैवल्ड अक्रॉस Punjab and KP for at least 3 years now. So I will not like to hazard a guess कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और क्या हो रहा है. But I wouldn't put it beyond IK. He's got a popularity spike for the simple reason कि incumbency का जो जो तौक है, वो इस वक्त तो दूसरे लोगों के गले में पड़ा हुआ है ना. हम्म, तो वो आएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा when he forms a government in Punjab and this, and then the national elections follows, and you can't have a caretaker government because there's a fully mandated government there. I'm saying on the assumption that he wins both, with I suppose he could. फिर क्या होगा? फिर झगड़ा होगा, फिर खून खराबा होगा, क्योंकि कौन सा इलेक्शन पाकिस्तान में ऐसा होता है जिसमें जब टोटल हर जगह सो कॉल्ड न्यूट्रल और ऑपोजिशन एग्रीड केयर टेकर्स होते हैं, तो फिर भी हर हल्के में हम आपने देखा, सिंध में, कराची में, मैं कराची को सिंध से अलग नहीं कर रहा, व्हाट आई एम सेइंग इज अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री के झगड़े कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे, आर्म ट्विस्टिंग होती है, दादागिरी होती है, एंड दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. लेकिन उसमें जब एक एक मुखालिफ हुकूमत का एलिमेंट आ जाएगा, तो व्हाट आर वी लुकिंग एट? We are looking at more turmoil and more upheaval. And the media can't control it. And I'm sure the people who unleashed this in 2016-17, they'd be hard pressed to control it. Because now the silos that they created back in 2016, the divisions that they created, they're not immune from it themselves. I mean, I don't want to say more. लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान होता है ना, loss of objectivity and loss of a platform
जहां मैं और आप साथ बैठ के बात कर सकते हैं इख्तिलाफ के बावजूद, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अब एक सर्टन माइंडसेट का आदमी जो है तो वो एक्स चैनल देखे जा रहा है, जो दूसरे माइंडसेट का वो वाई चैनल देखे जा रहा हम्म, है। मैं आपको फॉलो करता हूँ, कोई इमरान रियाज को फॉलो करता है, कोई किसी को करता है, और आपके चूंकि आप बैलेंस्ड हैं तो आपके सबसे कम देखने वाले और फॉलोअर्स होंगे, और मेरे भी बहुत कम है, अनलेस यू गो completely, like Tarzan, where nobody is interested it's in what you have to say, it's so insane कि मतलब the things other people do and then they call you by, मतलब it's insanity, right? Like आप इस मीडिया लैंडस्केप में जहाँ आप अपने कानों से कुछ सुने एंड देन देयर इज अ कैंपेन कि नहीं ये तो इमरान खान ने बोला ही नहीं, no. एंड यूर लाइक मैंने सुना है ये रहा नहीं नहीं, सामने, आप उसका लाइक वो क्लिप चला बोला दे, ही वो नहीं कहेंगे उसने। इसका कॉन्टेक्स्ट ही, और नहीं, वो आप हाँ उसका क्लिप उसकी अपनी आवाज में चला दे ना, दिल से कि जी ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही आपने तो 3 4 40 सेकंड में चला दिया, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही कुछ और। नो, आई मीन आई जस्ट फील पेन्ड। उसकी वजह पता है क्या है कि देखो ये इट हैज हैपेंड, आई मीन आई थिंक slightly more, how do you call it, information savvy societies have, I think, the last, for example, the congressional election in the US, gave me, हालांकि वो भी बड़ी कंट्रोल्ड और बड़ी मनी लेड एक्सरसाइज होती है, but I was somewhat reassured because I thought, that silos would mean a huge backlash for the Democrats, which we didn't come actually, which was a bit of a surprise. लेकिन हमारे यहाँ तो जो साइलोस बन गए हैं, और अब वो दे कट अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। अब आप ये देख लीजिए ना कि वो जो कल की, वो परसों जो जो ऑडियो लीक्स आई, एंड ऑफ कोर्स हु विल नॉट से दैट नोबडी हैज द राइट टू बग प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, बट इक्वली inappropriate, completely inappropriate conversations about with जजेस। benches and judges, and then judges also, यार लिख दें आप जो आपने जजमेंट में लिखना है, you're the final word, you're the court of appeal, ultimate arbiter in the country, लेकिन वो जो पॉइंटलेस कमेंट्स बीच में जो ही क्विप्ड वो जो अखबार वाले उठा के करते हैं, मतलब you see such a rot that at no place. अब आप देखो ना, अब I'm not, I mean, they can, if they find this also contempt, तो आपकी मेरी क्षमा कर सकती है, लेकिन एक मुझे बताओ कि इस वक्त लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में 12 जस्टिस हैं, हाँ, most benches that we see are like no more than 4 and 5 particular names. Now that reflects the silo mentality, because they feel कि एक certain mindset होता है, and it's not democratic, or it's not pluralistic, so to speak, और वो करते रहे, और surely they need to think, और मुझे short sightedness यूं लगती है कि they need to think of their own institutions welfare, not today or tomorrow, क्योंकि पता है क्या होगा, एक चीज में तो मैं काफी हद तक इमरान से एग्री करता हूँ, आई एम नॉट सो श्योर इज दैट ही इज केपेबल ऑफ रीबिल्डिंग इट, कि वो कहता है कि सब कुछ इतना रॉटन है ना कि इसको बम से उड़ा दो, इसको सब गिरा दो नीचे, फिर विल बिल्ड समथिंग। माय ओनली प्रॉब्लम इज दैट अगर वो गिर जाता है ना सब कुछ, तो ही विल बी सिटिंग अटॉप द रबल फॉर द नेक्स्ट टर्म, बिकॉज I seriously question anybody's, not just his ability to build the whole uh, edifice of whatever we want, a new social contract or whatever we want. लेकिन यार जो पोजीशन है, आप देखो, आप तो मुझसे आधी उम्र से भी कम हो आप, कि आपको भी ये साफ दिख रहा होगा कि ये चीज चल नहीं सकती, इट्स नॉट टेनेबल। ये किस तरह ये इसको धक्का लगा लगा के गाड़ी को चलाएंगे? आई मीन एवरी ईयर, अब देखो ना, अभी तो हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि पता नहीं शायद वो आज, आई हैवंट रेड, घंटा दो से मैंने नहीं पढ़ा कि वो पास हो गया, मिनी बजट नहीं हो गया, वाई से आएगा, एंड द नेक्स्ट बैटल इज इन जून, बिकॉज फिर आपके हाथ में प्याला होगा, यू डन वेरी लिटिल सॉर्ट आउट योर फंडामेंटल्स, अब आप, एक बॉम्ब टिक कर रहा था, आई हैव नो आइडिया व्हाई गवर्नमेंट, आई मीन योर सर्कुलर पावर डेट, एंड मैं उसमें नहीं जा रहा कि ये वो किसी ने क्यों उनको गारंटीड डॉलर परचेसेस, रिटर्न्स।
डॉलर रिटर्न्स हो, ये वो वो तो जिस वक्त पीपल्स पार्टी गई है उस वक्त एक पॉइंट एजेंडा था 2013 में, लोड शेडिंग. जी. And any political party would have reacted to that. People's Party would have also have dealt with it had it not been for Iftikhar Chaudhry's absolute mad hostility against the party कि कुछ करने नहीं दो. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बनाते नहीं, खाते खाते पीते नहीं, उसमें से यार को 5-10% तो खा जाते, लेकिन कुछ कुछ बन तो जाता ना. वो 5 साल तो टोटल डेड लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन. देन दे केम इन एंड देन दे डिड इट. अब वो दैट्स अनदर मिलस्टोन अराउंड योर नेक. मतलब 2.5 trillion. I mean, it's not a joke. When you see that your entire economy in the best of times is about $300 billion, how can you have these sizable chunks, which I call millstones around your neck, and still hope to be able to stay afloat? सर इसमें उस इदारे को सोचना चाहिए ना कि जब कोई सियासतदान कोशिश भी करें तो मुल्क में आप इतनी इंस्टेबिलिटी ले आते हैं कि उनको ये नहीं पता होता मेरी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी. एंड अभी भी Absolutely. जो लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिस तरह 2017, 18, 19, 20 में फिजा चली हुई थी कि सियासतदानों को तो जेलों में डालो, 5-5 साल जेलों में डालो, और फिर पता चले कि फ्रिवलेस तरीन केसेस थे. LNG को देख लें आप. मतलब पाकिस्तान का कुछ भला ही हो सकता था LNG टर्मिनल से, देख उसके साथ जो किया. देख जो किया, और कॉन्ट्रैक्ट्स, और out of just spite. या. And I also know it for a fact that the people they locked up, and I'm talking about Shahid Khaqan Abbasi and Miftah, that they were डिसेंट पीपल. always backdoor contacts with them, कि please come and help Imran and sort out this mess. I know it for a fact, at the highest level उनसे कहा गया. अब मतलब यही तो अलमिया है ना, कि उस वक्त तो आपको अपनी नाक के, और मैं आपको बताऊं, a lot of this I suspect, again, फिर आप मुझसे कोई प्रूफ मांगेगा और कहेगा कि जी आप एंटी फौज हो, ये तो मेरे पास नहीं होगा. But if you look at the timing of each of these so-called crises, this was triggered by one man's ambition to extend his own office. समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ. 2016 से, when Rahil Sharif was not given an extension and his successor was appointed, this must have been in the back of his mind that this bloody government will not give me an extension. So वो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये cause and effect से, अगर आप इसको, ये किसी ने इस तरह से एनालाइज शायद ना किया हो, लेकिन अगर आप देखें तो वो आते 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 वो 2018 में पूरा क्लाइमेक्स पे चढ़ा दिया, बिकॉज देयर वाज अ ईयर टू गो, है ना. फिर 2019 में वो मिल गई. उसके बाद 2019 से आप देख लो 3 साल का पूरे होते, 20, 21, 22, फिर उसमें. तो मेरे कहने का मकसद ये कि मे बी दिस इज दैट एनालिसिस व्हिच विल फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस एंड इट्स रॉन्ग. Fine, I'm not sharing news with you. I'm not claiming it's news. Excuse me. But all I'm saying is कि इंस्टीट्यूशंस का तो सत्यानाश कर दिया ना उसमें, और ऐसा वैसा सत्यानाश किया. आई मीन द ट्रूथ इज के यार लोगों को इंसाफ नहीं मिलता छोटी अदालत से ऊपर तक. हजारों लाखों केसेस पड़े हुए. एंड लाइक यू वर सेइंग कि जी वो बेल के लिए वहां मेला हो रहा है, वो मीडिया उसको 4 घंटे से कवर कर रहा है. द जजेस आर सिटिंग इन द कोर्ट टिल गॉड नो 6, 7, 8 बजे शाम में, और फिर वो अपीयर होते नहीं. आई डोंट नो, आई वाज टॉकिंग टू यू कि वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनको बेल वेल मिल गई. तो मकसद कहने का ये कि इंस्टीट्यूशंस है नहीं, एंड वी आर इन अ क्रिटिकल मैस. और मैं आपको बताऊं ये मैस जो है ना, मेरी रीडिंग है, बिकॉज आई ट्राई एंड रीड में, बट वक्त होता है. मैं यहाँ एक छोटे से गांव में रहता हूँ, देयर इज नो वेरी लिटिल सोशल इंटरेक्शन, तो बस पढ़ते पढ़ते रहते हैं. और मैं आपको ये बताऊं कि it is a right royal mess as they call it. और ये अगर हमारा जो हम एलीट कैप्चर कहते हैं ना, जिन्होंने किया हुआ वो बिल्कुल ठीक है, रेंटियर इकोनॉमी क्रिएट की हुई, बट दे शुड नो दैट they have reaped the dividend for as long as they could milk the cow. The cow has nothing to offer to them now. और अब नहीं करेंगे ना, तो I shudder to think what happens, because अभी तो ये है ना कि चलो सियासत का थोड़ा सा एक फायदा होता है कि एक उम्मीद ये लग जाती है कि चलो ये चला जाएगा, कोई और अच्छा आ जाएगा, कुछ हो जाएगा,
इमरान नहीं होगा, नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ नहीं होगा, पीपल्स पार्टी आ जाएगी, कुछ कुछ तो क्योंकि इलेक्शन उन्हें हम्म। लड़ना है, जीतना है, तो कुछ तो हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम जिस रैपिडिटी से कोलैप्स कर रहा है ना, देखो मैं बताऊं, आई एम अ फादर, आई एम अ वेरी रैशनल पीस लविंग पर्सन, लेकिन मेरी बच्ची 2 रात भूखी रहेगी ना, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई कैन डू, यू नो and the society has such a vast number of weapons in it. It's scary, actually. It's scary. एंड दिस इज आई थिंक और वन ऑफ माय प्रॉब्लम विद द इमरान खान फिनोमेना कि उनकी फंडामेंटल थीसिस ही झूठ है। एलीट ने इमरान खान बनाया ताकि आपको ये झूठ बिल्कुल। बताया जाए कि नवाज शरीफ और जरदारी चो, मसला है, इनके पेज चोर से है। हजारों करोड़ों ले आओगे तो पाकिस्तान की जमीन बड़ी सरखेज है, विदाउट यू एवर रियलाइजिंग के ठीक है नवाज शरीफ जरदारी में भी करप्शन की होगी, लेकिन बाकी जो हमारा पूरा एलीट है, ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, जुडिशल एलीट है, मिलिट्री एलीट है, फाइनेंशियल एलीट है, वो उसने कितनी कितनी चोरियां की हैं, वो कितना मॉरली बैंकरप्ट है। तो वो जो इमरान खान के साथ आ गया वो सादिक और अमीन हो गया, जो नहीं आया वो चोर है। इस बाइनरी से अगर आप बाहर निकलें तो यू विल रियलाइज that the system is not failing, the system is working exactly as it's designed to work. It's Designed to working work. for the people that designed it. No, but the point is that my considered Hmm. opinion is that it has delivered them a huge dividend, but it's losing its ability now to deliver to them तो वो because के पास तो है ना, because एग्जिट्स हैं सबके oh, पास। I I'm not so sure because 10 प्लॉट रखना जो है ना वो एक्सिट नहीं होती है। इस वक्त सबके जो लोगों को, खानदानों के, आधों के खानदानों के पास फॉरेन सिटीजनशिप्स हैं। हाँ दैट्स ट्रू। हाँ वैसे ये तो अब मैंने बड़ा ट्रेंड देखा है ये ब्यूरोक्रेसी में और इवन फोर्सेस में और पुलिस सर्विसेज में कि जी वो बच्चे जो है वो हम्म। सबके कनाडा में और कहाँ कहाँ जाके हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं लोगों से यही कहता हूँ कि देखो तुम्हारी इकोनॉमी जो है ना, जब ये चोर लूट गए फलाने कर दे वो के, आई सेड आई हैव नो डाउट, आई थिंक नवाज शरीफ, I I wouldn't say corruption, but patronage of the Zia years and his first couple of stints in power, SROs और ये आ जाए वो आ जाए और कंपनियों को फायदा। अपने Of टाइम के course, इमरान खान थे भाई, वो अमीरुल मोमिनीन। हाँ हाँ, अमीरुल मोमिनीन थे। पीपल्स पार्टी का फ्रॉम कराची लैंड टू व्हाट दे डिड ऑन द सुपर हाईवे विद मलिक रियाज, वो कोई आउट ऑफ लव फॉर मलिक रियाज तो नहीं किया ना उन्होंने, गोट उठा के बेच दिए। It was all for a profit. But my humble submission to anybody who says कि जी ये लूट के खा गए और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपकी इकोनॉमी जो है ना उस साल की 300 बिलियन के रफ लगभग है ना, यही जनरल कंसेंसस है। तो उसमें से आप डिफेंस निकाल दें, तनख्वाहें निकाल दें, ये निकाल दें, वो निकाल दें, जब सब कुछ डेट निकाल दोगे रीपेमेंट्स ना, निकाल दें। हाँ एग्जैक्टली exactly. रीपेमेंट तो मैंने कहा ही नहीं क्योंकि वो निकाल दो तो वो बचता ही नहीं। मनफी में चला जाता है, सिफर से नीचे। तो आई सेड अच्छा दूसरे लोगों को अब ये नहीं पता कि हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। देखो मुझे पता है कि लंदन और दुबई हैं जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर्स हैं और दे आर द सेफ हेवंस और एक्सेट्रा, लेकिन इतना नहीं होता कि वो आंख में खटकना शुरू हो जाए। डॉजी आप बिजनेस एम्पायर रन कर रहे हो, 200-400 मिलियन आगे पीछे छोड़ दें। आई मीन द ट्रूथ इज कि आई डू नॉट इवन बिलीव कि हमारे जो जो बड़े रिप्यूटेड चोर सियासतदान है सो टू स्पीक, उनकी भी वर्थ कोई बिलियन की होगी। इट विल ऑल बी साउथ ऑफ दैट, ऑल बी साउथ ऑफ दैट। I've lived, like Imran says, I've lived in the West. I've lived in the West for longer आप कह than रहे he हैं has आपसे lived. बेहतर मगरिब को कोई नहीं जानता। नहीं मैं ये नहीं कह रहा बाबा, मैं ये तो मेरा मुंह ही औकात ही नहीं है कहने की, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आई ऑल्सो लिव्ड इन द वेस्ट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स नाउ। भाई यहाँ से तो यार आजकल तो ये है कि किसी को आप यहाँ से पेमेंट आपके नाम की आ रही हो तो वो बैंक वाले पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, ये क्या है, क्योंकि there's quite time. I'm not saying the rich don't get away with financial crimes, they do. बट माय पोजीशन इज कि 300 बिलियन की इकोनॉमी जो है ना वो कोई दो सियासतदानों की चोरी ना बिठा सकती है ना खड़ा कर सकती है। दैट्स माय ओनली कंटेंशन। द होल, देखो पाकिस्तान में लूट मार के 2-3 बड़े साफ साफ एवेन्यूज हैं। लैंड, स्टेट लैंड that is given like largest to your beloveds, whether they be in uniform or in district administration, etc. I know many, I've had civil servants in the family and I realize कि उनकी क्या तनख्वाह होगी और suddenly when they retire उनके बच्चे सारे
फी पेइंग अमेरिकन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जाते हैं. आई मीन दे आर नॉट ऑलवेज नेसेसरीली ये ऑन फवाद स्कॉलरशिप. हसन फवाद आए हुए थे, वो कह रहे थे ग्रेड 22 पे 3 साढ़े 3 लाख रुपए तनख्वाह होती है। बताइए. तो अब 3 साढ़े 3 लाख रुपए तनख्वाह जो है ना, मतलब इससे ज्यादा तो जब मैं आज से 13 साल पहले डॉन के रेट था मेरी थी, यू नो, तो बिलीव फिर मी. ये कैसे भेज रहे हैं अपने बच्चों को यूएस पढ़ने के लिए? तो इतना ये तो यही सेमेस्टर की सवाल. फीस होगी, मतलब देखो ना, महीने की। नहीं यही तो फिर खाओगे कहाँ से वगैरह वगैरह. तो ये अच्छा. और क्या है कि जो डीएमजी ग्रुप है उसके लिए रेवेन्यू पावर्स उनके पास होती हैं. आई थिंक द बिगेस्ट मनी स्पिनर फॉर देम इज अलाउइंग कन्वर्शंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर हाउसिंग स्कीम्स, है ना. हम्म, द मोमेंट द स्टेटस चेंजेस, तो वो एक्स नंबर ऑफ 1,000 रुपीज का जो एकड़ होता है वो फिर मरलों पे और 80 यार्ड्स पे बिकना शुरू हो जाता है, उससे 20 गुना पे. रूडा। एंड रूडा इज वन एग्जांपल. और दूसरे ये कि फिर ऑफ कोर्स डीएचएस तो इज अ वेरी वेल नोन एंटरप्राइज यार. वो 2-3 प्लॉट एक बेच दो, एक ले लो. मतलब जो जिस चीज का दुख होता है कि जो सो कॉल ईमानदार अफसर हैं, मतलब उन्होंने कोई खाना पीना नहीं किया, उनको ईमानदारी में, क्योंकि उन्होंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम फौज में गुजारा है, तो एक घर इधर दे दो, एक उधर दे दो. वो मुझे एक बहस कर रहे थे साहब के, वो आप तो कहते हैं घर दे दो, वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू इट. और मैंने कहा यार, आप कहते हैं 1.25 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलती है, उसमें आप कंट्रीब्यूशन से, आई विश आई कुड डू दैट. आई कुड नेवर ओन अ हाउस इन पाकिस्तान. यू नो ये जिस घर में मैं रहता हूँ, ये छोटे से गांव में है, तो ये हम लोग ओन करते हैं, लेकिन उसमें there's another talented bhabhi in Pakistan who's had a major share in building what we have today. मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कहने का मकसद ये कि 3-4 प्लॉट भाई आपके बाप की जगह नहीं है. दैट लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. पीपल ऑफ पाकिस्तान. उनको आप कुछ देते नहीं है, वो आप सारे उड़ा के ले जाते हैं. अब मैं बताऊं, आई एम अ फूडी. अब मैं नाम नहीं लूंगा. फेसबुक पे एक पेज है कराची का, यू नो क्योंकि वो, मैं अगर उनका नाम ले दूंगा तो मुझे निकाल देंगे. मैं दूर से अब देखता एक रहता एक से हूँ तो मैं थोड़ा. निकाला जा चुका हूँ, तो शायद वही होगा। ओके, हो सकता है वही हो. एंड आई सी कि जो हमारी इलीट है, शहजाद, इतनी एरोगेंट और मायोपिक है कि उनको ये नहीं पता कि गरीब के घर में हाल क्या है इस वक्त. खुदा की कसम, अगर पता हो ना तो खौफ के मारे ये चीजें नहीं करे कि ओनली orders only 6 कबाब एंड 3,000 रुपीज ओनली, योर काइंड ओनली. तो मकसद कहने का ये, जब आप एक बबल क्रिएट करके उसमें रहते हैं ना, तो हम्म। जब तक तो वो सस्टेनेबल होता. अब मेरा तो प्रॉब्लम ये था कि अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, माय अब फिर कहेंगे कि अब ये पार्टी ढूंढेंगे कि किस पार्टी की, क्योंकि मेरी बीवी की फैमिली जो थी ना, दे वर रिपब्लिकन्स, एंटी फ्रैंको. तो वो, द ग्रैंडफादर वाज अ anarchist, and her aunts went to prison in Franco's time because they were general secretary of the Communist Youth League and so on. The orientation of that sort comes. And she was horrified because we've lived in England and we've lived here a very middle class existence. एंड शी सेड, पाकिस्तान में चूंकि आपका काम है, और चूंकि डॉन मुझे दफ्तर से, वो लंदन से लेके आए थे, तो घर गाड़ी को थोड़ा बहुत उन्होंने ख्याल किया था मेरा. तो शी सेड कि आफ्टर अ व्हाइल आई फाइंड इट पेनफुल एंड ऑलमोस्ट अनटेनेबल कि जो गैप्स हैं. आई मीन इट्स नॉट एज इफ आई वाज मेकिंग वो टीवी प्रेजेंटर्स मेक. मैं कोई लाखों में नहीं कमा रहा था, लेकिन इवन देन we realized the disparity was just, अब स्टूपिड लगता है कि इस चीज पे मॉरल स्टांस ले आदमी, बट इट इज एन इश्यू ऑफ मोरालिटी. कोर्स इट इज। जो दो लोग आदमी अगर आपके खाना खाने नॉर्मली जा रहे हाँ, हैं और दस हाँ, हजार रुपये बिल आ रहा है, जो अब ये आउट ऑफ द, मैं आपको ये शॉकिंग चीज नहीं बता रहा, ये एक बहुत कॉमन बिल है। लाहौर कराची के अगर आप टॉप हाँ, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एब्सोल्युटली, दो लोगों का 10,000 बिल बड़ा नॉर्मल बिल है। ये किसी का पूरा घर चलता है महीने का, 4-5 लोगों का। एब्सोल्युटली. तुम्हें पता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब हम रहते थे ना, तो वो मेरी बच्ची कभी ये मंगा लो, वो मंगा लो. मैं, यकीन करो, मैं रात को दफ्तर से थका हुआ जाता था. आई से, बेटा आई विल गो गेट इट फॉर यू, बिकॉज मुझे शर्म आती है कि तुम, अब, वट एवर पीपल ओवर देयर,
we try and do whatever little, जितनी इस्तेताअत थी कि सबके लिए मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो. But I used to say it's absolutely criminal कि तुम अगर एक वो आई डोंट नो पिज्जा ही ऑर्डर करो, वो आई डोंट नो जमाने में कितना 800-900 रुपए का होगा, तो ये तो बेचारे हफ्ते में उससे अपने घर का राशन चलाते, and I truly think that it's amazing. I think कि इतना वो I think that एक चीज, हाँ, I would say which is probably sustaining and people keeping them away from starvation is the huge parallel economy, because all the stats that we have is for the formal sector. तो वो थोड़ा बहुत, लेकिन जो inhumanity है, और जो people of means, मैंने देखे, I don't want to go too much into that. That's a very bitter chapter. I mean, after a while, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि यार देखो, I know we both left the BBC, came here chasing a dream, and I supported you. लेकिन अब यहाँ जो रोज मैं देखती हूँ ना, it's just painful. तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने 12-13 साल दोनों ने बेरोजगारी का मायदा किया, और अपना कोई फ्रीलांसिंग कर दी, कोई किताब एडिट कर दी, कोई कंसल्टेंसी कर दी, घर भी बिक गया हमारा लंदन वाला, और सब कुछ हुआ. But to be honest, everything like that, वो लानत भेजो 10 दफा, अगर कोई थोड़ी सी अवेकनिंग हो जाए कि यार थोड़ी सी स्लाइटली, और मैं कोई यूटोपिया पागल नहीं हूं, मैं बहुत दुनिया देखी हुई है, कि थोड़ी सी जो इतनी डिस्पैरिटीज है ना, इतनी अनइवन ना हो, थोड़ा सा उसको कर दो. गरीब आदमी की एस्पिरेशन क्या है? गरीब आदमी की बच्चा पढ़ जाए, माँ का इलाज हो जाए, 2 वक्त की रोटी खा ले. 3 वक्त कहते हैं, लेकिन 2 ही वक्त ही खाता है ना गरीब आदमी. सुबह खाता है, रात को खाता है. डजंट हैव 3 meals, just too much. Especially where you realize that, कल परसों मुझे वो कोई तस्वीर दिखा रहा था कि वैसे नहीं, वो मलिक रियाज के बेटे की और पति की इसकी वो लेटेस्ट जो है ना, रेंज रोवर, वो जहाज से उतर रही थी, किसी ने तस्वीर ट्वीट की. आई वाज थिंकिंग कि यार, अच्छा, और अभी मुझ पे 4 अटैक आएंगे कि जी आप तो लेफ्ट विंग है, फलाने हैं. भाई, लोग कमाते हैं तो लोग अय्याशी करते हैं, जरूर कीजिए, लेकिन you can't divorce yourself from your surroundings. अब इस वक्त ये जो टोरी पार्टी ने इंग्लैंड में हाल किया है ना, आप देखना what will happen to them. They'll get decimated at the next election. Decimated. I mean, people say अगर अब as we speak election होगा ना, तो they'll be nowhere, because people have completely seen through their lies that led to Brexit, and they have created an ultra uber rich man's club, which the Tories always were very market and business oriented. लेकिन अब तो वो भी exclusive बन गया, where entire swathes of the population are completely living in deprivation. तो मीडिया का तो भाई जो हाल है, that is in our case is reflecting society. There's chaos, some which was by design. जैसे आपने मुझसे सवाल किया, तो वो तो डिजाइन से तो एक वक्त होगा, लेकिन like the Taliban, like the Afghan jihad, like terrorism and Fatah, देखो ना आप, जैसे my father used to say, it's very easy to unleash chaos, but you'd have to be a real master stroke player to be able to reel it in when you want it, क्योंकि वो जो reel it in है ना, वो नहीं होता. विच इज़ वाई हम कभी कभी जो है ना इंस्टीट्यूशंस पे तो तनकीद करते हैं, बट हम पर्सनल नहीं जाते. पर्सनल एम्बिशन के तहत जो लोग अनलीश केओस करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन और मुल्क का तो नुकसान करवाते हैं, लेकिन उनके पर्सनल एम्बिशंस फुलफिल हो जाते हैं, सो उनको कारवा नहीं होता. आई मीन आपने नहीं, लेगेसी आप ऑफ सही. हम आपने लेगेसी ऑफ हमीद गुल पे आर्टिकल लिखा था. फॉर मोस्ट पीपल हु हैव नॉट डग डीप इनफ, उनके लिए हमीद गुल एक बहुत बड़ा हीरो है. हीरो, बट इन मेनी वेज जितना हम जिया की लेगेसी पे कर रहे हैं, उतनी हम हमीद गुल की लेगेसी पे कर रहे हैं. absolutely. But I don't see the two of them apart, हाँ. if you know what I mean. Yeah. भाई देखो ना, हमने तो यार उनकी लेगेसी तो हमने तो ये देखी ना कि कराची यूनिवर्सिटी में मर्डर, मेहम,
गोलियां लग रही थी लोगों को फॉर डूइंग नथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गनमैन क्राउड ऑन द लेफ्ट एंड द राइट, वो तो एक दूसरे को मारते थे, दैट नो लव लॉस्ट फॉर एनी ऑफ दैट. बट आई रिमेम्बर वो एक पीएसएफ का लड़का था, कदीर आबिद, what a nice decent boy, was shot in the head, and for nothing, just to reinforce that Hamid Gul, Zia primacy, ke bhai, we are it, and I excuse me. और और वो आज तक पे कर रहे. अभी कराची सीटीडी में हुआ, ना आई वाज थिंकिंग कि यार आप जा रहे थे, and I made fun. Hamid Gul, I interviewed him once many years ago, I think 97, 96. तो he said, you made great fun of me कि जी हम ये जंग यहां से काबुल से सेंट्रल एशिया लेके जाएंगे, आप देखें वो वहां तक पहुंच गई. मैंने कहा अब, I was interviewing him for a BBC English documentary, so I didn't pick an argument with him. But the truth is that वो आप लेके तो वहां जा रहे थे, और सीटीडी में वो कराची के सीटीडी और कराची पुलिस ऑफिसर, वहां वो जिहाद आया, आज भी आया. 50 साल बाद, 40 साल बाद आया, नहीं आया. उस वक्त हम लोग कहते थे, तो हमें कहते थे, जैसे आज कहते हैं फलानी पार्टी के लिफाफे, उस वक्त कहते थे रूस के तनख्वाहदार फलाना. यार रूस ने हमें वोट ही पिला देते तो हम थोड़ी सी उनकी चमचागिरी कर लेते. वो भी कम वक्तों ने नहीं पिलाई. हम तो अपनी अपने मुल्क की और अपने लोगों की फिक्र कर रहे थे ना. ट्रिपल डिस्टिल्ड लिफाफा अगर मिल जाए कराची में आजकल, ईद हो जाए. लोगों के Santa भी comes सवाल थे. early. Let me just get through them as well. How can Pakistan's electronic media become more professional given its perceived political bias and divisions? $1 million question है भाई ये तो. $1 million question है भाई. यकीन करो कि वो मेरे तो, अब वो कहते थे ना, इस फिक्र में बाल सफेद हो गए, अब तो बचे ही नहीं है. I frankly I have no clue. I mean, I think दो challenges हैं मीडिया को, लेकिन we again go to the fundamental point that you raised earlier. Who owns the media? देखो, मीडिया की एक्सेलेंस में जो ट्रू ब्लू मीडिया ओनर या प्रैक्टिशनर है मीडिया का, उसका ही इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जो उसकी आती है क्रेडिबिलिटी से, कि उसको लोग देखें, पढ़ें. क्यों? अगर वो नहीं होगा तो उसकी कोई एंटरप्राइज नहीं है, उसके कोई रियल एस्टेट के गोल्ड माइन नहीं है, या सिगरेटों का कारखाना नहीं है, या घी प्लांट नहीं है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, या सोने का बिजनेस नहीं है. तो वो इन्वेस्ट करे एक्सीलेंस में. लेकिन चूंकि नाउ that the butter that is available to the media in terms of advertising, that is being spread so thin कि वो, I seriously doubt कि कोई short term में कोई possibility है, और कोई बड़ा विजन वाला कोई ओनर है कि जो I don't know कोई philanthropist भी हो, और उसके पास $2 billion का war chest भी हो, वो कहे कि यार मैं इन सबको no profit पे चलाऊंगा, but I will serve this country. लेकिन पता है क्या, अब तो वो ये हो गया ना कि खेल, और इसमें मीडिया की भी उतनी गलती है जितनी उसके खिलाफ साजिश करने वालों की गलती है, कि ये जो सोशल मीडिया है ना, it has taken a lot of the agenda out of the traditional media's hand. I mean, at least that's what I think. I think वो उसका solution भी वहीं पे है. Expecting GOARY या एक्सप्रेस इनको हम philanthropic कोई benevolent capitalist बना देगा is very hard. जिस तरह इंडिया में न्यूज़ लॉन्ड्री है, I think that's a great model. Independent subscribers, भाई अगर आपको अच्छी न्यूज़ चाहिए, आप अगर 800, 900, 1000 रुपए दे सकते हैं महीने का for them to work. अब जिस तरह ये पॉडकास्ट है, इट्स अपलोडेड फॉर फ्री, लेकिन ये पिछले 4 साल पेट्रियन से चल रही है. हमारे जो पेट्रियंस हैं patreon.com पे, दे फंड इट, राइट, विच इज़ वाई हमें नई एडवर्टाइजमेंट लगानी पड़ती है, विच इज़ वाई हम कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जैसे हमें ये रिस्क नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगी, या इस पे देखिए अगर शहजाद, आपको एक एडवांटेज है ना, कि आई एम श्योर कि आपके पेट्रन्स जो हैं, आई एम जस्ट डूइंग अ गेस वर्क हियर, दैट पॉसिबली you tapped into the diaspora which was looking for a bit of sanity, है ना. पाकिस्तान में it's a perpetual problem, no matter what content you create.
ये जो लोग कहते हैं ना 10,000 दो लोग जाके खाना खा लेते, उतनी इस्तेताद रखने वाले लोग भी जो है ना, आप उनसे कहो कि यार आप 4,000 रुपये महीना दे दो, आई डोंट ना नो, आई दें, मीन इट, 4,000 आई मे महीना बी, ना दें, बट इवन अगर अब जिस तरह हाँ एजाज सईद, उमर चीमा एक शो करते हैं, टॉक शॉक, हाँ, आई आई थिंक सॉ इट्स अ वेरी सी गुड दैट, शो, इट्स अ वेरी गुड या शो। अब वो दो जर्नलिस्ट हैं, ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे, उन्होंने मिल बैठकर एक शो बनाया, एंड आई थिंक होपफुली वो यूट्यूब रेवेन्यू से आई होप देर सो, अर्निंग, तो वो। अभी अभी उनके नंबर्स यूट्यूब के, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड करेंगे, बट आई हम्म टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, आई मीन देव या इन्वेस्टेड इन इन अ डिसेंट कैमरा एंड साउंड सिस्टम एंड दिस एंड दैट, एंड वो चंडू खाने की बकवास नहीं करते, दे डू हम्म रिसर्च स्टोरीज। देखो, दिस टेक्स मी बैक अगेन टू टू हाउ कॉम्प्लिकेटेड द पाकिस्तान स्टोरी। अगर आप उमर चीमा की और आजाद सैयद की वीलॉग्स वगैरह देख रहे हैं, और एक लाहौर से भी एक साहब करते हैं, तो there's some kind of a purge going on in intelligence agencies, I don't know if you've seen their latest, या यस यस। कि वो कुछ लोग निकाले गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये, and I realize now that perhaps they were rushing towards the poison chalice, but maybe had they not done what they did through the VONC, तो मुझे तो लगता है कि वो खेल इमरान खान के भी हाथ से निकल जाता। द वे, institutions within institutions, there were these cliques being created who were taking over things, from somebody was saying one of them was posted to the cricket board, and because cricket board has a lot of revenue back and forth from overseas, from test matches etc, कि वो पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, अब उसमें कितना इन्फॉर्म्ड है और कितना अनइन्फॉर्म्ड है वो तो नहीं, आई ट्रस्ट, largely trust Umar Chima and Azaz, because they're pretty solid. But the point I'm making is कि ये जो हर तरफ से मुल्क को एक क्रिमिनल एम्पायर्स देखती है ना, with drool running down their chins, that is scary। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो मुल्क का, तो भाई जिसके पास आज 100 है उसके पास कल 200 ही होगा ना, कम तो नहीं होगा। हम्म लेकिन हमारे यहाँ वो, आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। वो कहते हैं कि भाई जो कुछ करना आज रात को करो, और फिर वीजा वीजा तो है, फिर उसको ट्रांसफर करो एंड गेट द हेल आउट, यू नो। What steps can be taken to improve media coverage of Balochistan, which currently receives limited attention due to a lack of commercial interest and viewership? I think it's not lack of commercial interest and viewership. I do not agree with that hypothesis actually. I think Balochistan still largely untold story. Thank God for social media कि थोड़ी बहुत चीजें अब निकल आती हैं, और उस पे सरकारी भी रिएक्शन आ जाता है और लोग छूट फूट भी जाते हैं। लेकिन that is an absolute sinister where I know it for a fact, and I won't name any names, that in the past both the security services and militant groups have made life hell for journalists. So they reached the conclusion, no matter how objectively we try to report it, we're going to get killed in the end, or run foul of somebody or the other. And I really truly think that, जैसे वेस्ट में हुआ, well, people who were covering IRA या ETA स्पेन में यहाँ कवर कर रहे थे journalists, that there was some kind of an unwritten agreement even with the militant groups or terror groups that reporting is not a crime, I mean nobody's doing this line or that line, और एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्टिंग जो है उस पे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ अगर वो बफर्जे महाल वो मिलिटेंट ग्रुप्स तैयार हो जाए, तो जो लोगों को उठा के गोलियां मार के उनकी लाशों पे नाम की पर्चियां और शनाख्ती कार्ड का नंबर पिन करके फेंक रहे थे, क्या वो भी उस बर्दाश्त का मुजाहरा करने के काबिल हैं या नहीं? The two small things give me a bit of hope. Again, like I said, I am an eternal optimist. Ali Wazir's release and Gulala Ismail's parents' case, I broke my heart to see the last photograph, the one before where they were acquitted, when they came from home to hear the verdict, and they were carrying bags full of overnight clothes, etc., because they didn't know whether they were going to prison or they were going back home, तो अब अच्छा, हमारी तो हम तो ग्रेटफुल फॉर स्मॉल मर्सीज इन चीजों के लिए कि वो पता नहीं 70-75 साल का बुजुर्ग कपल है, देखो नथिंग टू डू विद एनीथिंग, गोशा नशीनी है,
रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनको ये नहीं पता कि मैं अदालत में आया हूं तो मैं घर जाऊंगा या जेल जाऊंगा, फॉर नो क्राइम, फॉर नो क्राइम. एंड आई थिंक दिस impunity has to end. And I think, to be very honest, if the military leadership is now concerned about Pakistan's future and the chaos that is reigning supreme in the country, they have to reflect and say that they've tried this, for years and years and years, and it has delivered them zero, zilch. And not counting, देखो मैं बताऊं, my father served in the army, okay, 50 years, 50 years ago, but camaraderie बहुत होती है. No senior officer likes to see a young officer die on his watch, और कितने बच्चे मरे. मैं मतलब civilian lives are as important, even more important, because they don't sign on for that kind of violent activity in life. But all I'm saying is कि इनका अपना कितना नुकसान हो रहा है. Every day the young people dying, every day, or and of course you have given yourself sanction by forcing the media, by everybody to say कि जी इनको शहीद लिखें. बेशक शहीद है, जो भी अपना काम करते हुए मारा जाता है वो शहीद ही होता है. No matter if I'm cleaning the road and a truck crushes me, I think that is also shahadat because I was working. But the point I'm trying to make is that कहीं तो कोई एंड गेम हो ना कि इस chaos का से हासिल क्या है. अब इस वक्त I think, and I think Bajwa towards the end sort of started to realize, and cleverly when he took his foot off the IK pedal. हालांकि उस वक्त तो शायद पार्ट में उनका एक्सटेंशन का भी था कि इमरान से अब लड़ाई होगी, वो नहीं देगा तो दूसरों को ले आओ, मे बी दे विल do something and help us along, help me along rather. लेकिन so far the new army chief, at least face value पे वो कर रहे हैं, तो he must also review policy, that you can't treat a part of your own country as one big hostile chunk of people. And you need to, of course you need to police. I'm not saying कि militant groups नहीं, I'm not an idiot, I can see कि जब उधर वाले को गोली लगती है तो इधर वाले को भी एक आध को गोली लगती है, तो वो भी कोई चलाता है. Of course I'm not naive and I'm not blind, but the point is कि जो आपका तर्ज अमल है ना, उसमें फेयरनेस का एलिमेंट बहुत जरूरी है. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ, it's easy for me to say, मेरे किसी दोस्त को थ्रेट होता है, go nuts, ट्विटर पे कोई अनरीजनेबल गाली आपको दे दे तो मैं लड़ना मरना शुरू हो जाता हूँ. तो ये तो people's lives are on stake, at stake. But all I would say is that, review this policy like you've tried, or at least said that you're reviewing the policy of taking part in politics, and understand that it is not delivering. You see, किसी भी पॉलिसी को आप इतने दिन जब चलाते हैं और जब वो डिलीवर नहीं करता, मैंने उस दिन कॉलम में लिखा कि बिफोर अली वजीर रिलीज कि यार you've tried everything, why don't you put him on a committee कि फाटा में पीस कैसे लाएं? Why don't you just see what he has to say? If you don't agree, don't listen to him. लेकिन उसको जेल से तो निकालो यार, उससे पूछ तो लो. और जब वो एक मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा ना आपके कॉन्फ्रेंस रूम में, तो उसकी भी रेटरिक वो टोन डाउन हो जाएगी, because he'll find hope that I'm not alienated and I'm not being treated like some hostile foreign force. यार कितनी देर हो गई, ये तो आपका पॉडकास्ट तो बेड़ा गर्क हो गया. दो तीन बस क्वेश्चन है, let's just end this. Sure. Why journalists have become politicians? Why are they taking sides when journalists are supposed to be objective? भाई जर्नलिस्ट जो है ना, I've long maintained, और इसमें मुझसे बुरा मान जाते हैं, जर्नलिज्म का काम जो है ना, that is not taking pride in strolls through the corridors of power. जर्नलिज्म का काम है रिपोर्टिंग करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, उनके इन्फॉर्म्ड ओपिनियन डेवलप करना. हमारे यहाँ मसला ये है, and I say this with regret, I've also worked in the past in Islamabad in particular. It just becomes so intertwined, कि minister साहब, the assembly, this and that, everybody, that you forget who you are. अब शाम में उनके साथ बैठ के bread break करते, maybe something stronger if somebody is so inclined. नहीं, ब्रेड के साथ तो चाहिए होता है ना सोक करने के लिए. Otherwise get stuck in the throat. or and
आफ्टर अ व्हाइल देखो, एक दफा मैंने कहा था तो एक दो सीनियर लोग नाराज हो गए थे. आई यूज्ड टू से कि जर्नलिस्ट की द बिगेस्ट प्रोटेक्शन है, ये जिस तरह की उठाई गिरी वीरी होती है, वो ये है कि all parties to a conflict, and far more importantly your consumer of whatever you're producing should know that you don't have skin in the game, you have no pretensions of being a player. अब मुझे आप हैंड ऑन हार्ट बताइए, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेता, आपके प्राइम टाइम जो टीवी वाले, प्राइम टाइम, उसमें एक्सेप्शंस, ऑनरेबल एक्सेप्शंस असाइड, हर कोई जो है ना वो अपने आप को ये समझता है कि जी वो सीधे we'll bring down governments and we'll plant governments and we'll do this and we'll do that. That's fine, as long as you're doing that through journalism. Brilliant. If they deserve to go and you've got stories enough to, then do the bloody stories. Yeah. You can't be on a bullhorn on a megaphone to say अगर that. आप किसी पार्टी के तो व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे हैं तो फिर आप एग्जैक्टली, मतलब फिर साफ ही नहीं हुए ना, तो आई थिंक वो डिस्टिंक्शन जो है ना वो मिट गई है, अब मिट गई है. अब देखो ना, आपको तो सब सारा वक्त कहते रहते पीपल्स पार्टी, मुझे भी कहते रहे, अच्छा दे विल ओनली सूप ऑन द ट्वीट फॉर एग्जांपल जिसमें आप एक्स पार्टी को कह रहे हो, और जिस दिन आप दूसरे को कह रहे हो वो कोई नहीं. अच्छा, अब दूसरों की तारीफ करो या उन पे रोना रो कि दे आर नॉट बॉदर्ड आप उनको क्या कह रहे, क्योंकि वो कभी रियली इट्स दैट रिएक्ट. उस पार्टी के फेवर में बायस नहीं हो सकता, दैट बिकॉज आई थिंक सम पीपल थिंक दैट द मॉरली राइट पोजीशन इज टू सपोर्ट इमरान खान, सो इफ यू डोंट तो आप करप्ट हैं. अगर आप खुल के इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो आप मॉरली राइट हैं, फिर बायस का क्वेश्चन राइट ही है. नहीं आता. आई मीन जो भी हुआ होगा उसके अभी किसी पॉडकास्ट में दिस होस्ट स्टार्टेड क्राइंग टॉकिंग टू इमरान खान, या विच आई इज मीन फेयर, उसके अपने इमोशंस होंगे, मैं उसको नहीं नहीं बोल रहा, बट लेकिन नहीं अगर लेकिन बट सर इफ आई मे जस्ट से दिस, अगर हाँ कल sure. को सामने मेरे नवाज शरीफ बैठा हो या मेरे साथ मरियम नवाज बैठा हो और मैं रोना शुरू हम्म, कर दूं कि नवाज शरीफ जब से गए हैं मेरे वालिद साहब की होप खत्म हो गई है, प्लीज नवाज शरीफ को हम्म, वापस ले आए, मेरे साथ हम्म. उसके बाद ट्विटर पे क्या होगा? मेरा तो वो खत्म ही हो जाएगा ना करियर, या मैं बिलावल भुट्टो के साथ ये करूं. सो इट्स फाइन एग्जैक्टली, टू हैव योर ओपिनियंस एज लॉन्ग एज कार्ड्स एग्जैक्टली. ऑन द टेबल. आप ये ना बोलें कि यार मैं अनबायस्ड हूँ, मैं नहीं हूँ. अगर आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, किसी की विंग का, मीडिया विंग का हिस्सा हैं, जस्ट इट्स फाइन टू बी, बट जस्ट बी क्लियर अबाउट दैट. देखो, ये यही तो अब प्रॉब्लम है ना. अच्छा, मैं तो फॉर्मल ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अवाम के पर्सपेक्टिव से तो ये जो फ्रॉम टिकटॉकर्स टू यूट्यूबर्स है, ऑल जर्नलिस्ट ना, वो तो सब अपने आप को हाँ. तजिया निगार कहते हैं. वो कहते हैं मैं खबर ले आया हूँ आपके लिए ताजी ताजी. आई मीन वो हर तरफ. अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी इज अगेन द ऑनरेबल नॉट डिसऑनरेबल एक्सेप्शन, आई डोंट नो व्हाई. उसमें यू कैन 6 ब्लॉक्स के बाद आपको पता चल जाता है कि अच्छा दिस इज पीटीआई एंड दिस इज पीएमएल. तो सबसे पहला तो उसकी निशानी ये होती है कि जो पीटीआई वाला होता है ना, तो उसके तो लल्लू पंजू के भी ना 7-8 लाख फॉलोअर्स होते हैं ये. हम्म. दूसरे वालों के 2 लाख 2.5 लाख, अगर बहुत स्टैब्लिश्ड हुए तो कोई 2.5-3 लाख, 2.25-3 लाख. कपल ऑफ एक्सेप्शंस जो हर तरह की बात करते हैं. बट आई डू थिंक that this partisanship and this openly aligning with, देखो हमारे जमाने में जो हमने साफत शुरू की ना, it was easier because a dictatorship, complete total dictatorship was there, so the black and white is very clear that if you were a journalist, and a decent journalist with a heart and soul, you could not support dictatorship. ठीक है ना? You supported democracy. Now whatever that meant, whoever was in the forefront of the struggle for democracy, आप उसको सपोर्ट, उसकी हर मैडनेस को नहीं, लेकिन आप उसको वॉइस तो देना, क्योंकि उनका एक लीडरशिप का राइट है कि लोगों तक उनकी बात पहुंचे. सिंपल एज दैट. अब तो वो लीडर की बात बाद में पहुंचती है, वो पहले लीडर की तरफ से खुद बोल देते. आई स्वेयर. अच्छा, वो, और यू सी इवन मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स, एक आध लोग हैं कि वो इधर से उधर से उधर से वो 4 सवाल करते हैं ना, तो यू स्विच ऑफ बिकॉज यू से कि यार ये तो मुझे लग रहा है सवाल कर रहे हैं या फवाद चौधरी कर रहे हैं, तो उनको तो मैं सारा सुबह से क्लिप सुन के सुनता आया हूँ. आई डोंट वांट टू वेस्ट अनदर आवर ऑन दैट. लेकिन आई डोंट नो, जैसे आपने कहा, एंड इट वुड हैव डन वंडर्स
आपने कहा है, पता नहीं किसी और ने कहा सोशल मीडिया पे कि मरियम नवाज should have been advised to give the interview, for example, by some media manager to somebody like Shazia Khanzada. You know, it would have been more credible. I mean, I'm not saying anything against Salim Safi, but I think he's polite, like somebody said, that he's extra cautious with women because of cultural baggage that he was एक जमाने में JI वगैरह में वो थे. He was one of Hamid Gul's warriors. So, I think she should have faced, tougher questions, and सियासतदान तो नहीं भागते, लेकिन tougher questions, okay, they can make you look bad if you don't have it in you, and if you don't have it in you, you don't have to be made to look bad. Sooner or later, it will be revealed to the public. एंड आई थिंक अगर आप But if you, स्लो एंड स्टडी का भी रोल है, अभी ये पॉडकास्ट है, मतलब हम सेंसेशनलिज्म के बगैर इतने साल कर रहे हैं, अब पॉलिटिशियंस खुद आना चाहते हैं. सो यस, अभी एक हमारी रेगुलर लिस्टिंग है अनम बट, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया. उन्होंने बोला कि तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बातें सुन के मुझे इतना यकीन नहीं आया, लेकिन जिनको मैं सुनती थी, मोहित पीरजादा, इमरान, रियाज खान, ऑल दीस पीटीआई पीपल, उनका जब इन्होंने कच्चा 180 मारा अप्रैल के बाद, लिटरली जो बोलते थे उसका पोलर ऑपोजिट बोलना शुरू हो गए. आई वाज लाइक, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग दैट आई बिलीव्ड इन, बिकॉज हाउ कैन दे स्विच सो मच एंड in देन just like that. प्रिटेंड के पहले भी हम सच बोल रहे थे और अब भी सच बोल रहे थे, अब भी और सच माफी बोल भी रहे नहीं थे. मांगी. नहीं तो यही है ना. अब मैं आपको बताऊं ना कि and this goes to the very core. दोस्त भी हमारे उसमें 30 साल की दोस्ती. I don't want to name anybody. The idea here is to discuss the general state of the media, not individuals. लेकिन ये जो बड़ा stupid crossover है कि today I'm a journalist and tomorrow I'm this, and yesterday I wish to be this and day after tomorrow I'm this. I think more straightforward fundamental choices need to be made. I know कि वो इंग्लैंड वगैरह में क्रॉस ओवर है, लेकिन इंग्लैंड में या अमेरिका में वो largely that crossover is one way or the other, and it's not a constant in and out. When you have got a government position, अमेरिका में you है are there. वैसे. अमेरिका में अगर यू कैन अमेरिका, जॉइन द डेमोक्रेट पार्टी, गो बैक टू सीएनएन, गो टू yes, न्यूज़ बीबीसी. अमेरिका में, अमेरिका में इंग्लैंड में काफी वो है. relatively कम है. हाँ, true, I agree. I was reflecting as I said that, and I think you have a fair observation. But Does how has Dawn changed in its coverage and policy since he left as editor? Why has its objectivity changed ever since? I don't think it has. Maybe, खैर, but आपकी राय क्या है? I do not agree that it changes objectivity at all. I mean, I think the core of the newspaper, especially in tough financial times, is the heart of the paper is those two columns where the editor speaks his or her mind. And if you look at those two columns, which is the material is printed across the two columns, it has been one of the most consistent papers in terms of editorial policy since before my time. And Zafar Abbas is a very capable and upright man, and I think he's one of the finest leaders in the industry. I would say, of course, I'm sure, I mean, I don't, it's very important. I learned this in the BBC. When you leave a job, you leave it. Otherwise you look like you're missing it if you go back to it quite often. So I don't, I speak to him as a friend every few months, but that's about it. But I suspect that, the financial pressures also, because there was a systematic campaign to destroy the paper, and good on them. They survived, and they, continued doing what they do best. And even today, I mean, people say objectivity, etc. Is it objective to black out Malik Riaz's shenanigans from the entire spectrum of the media? वो जो लेफ्ट है, राइट है, जो प्रो पीटीआई है, जो प्रो पीएमएल है, वो कोई भी कवर नहीं करता उसको, सिवाय एक डॉन अखबार के. So it's easy, and I don't think it is let go of objectivity, and I think it's important. देखो, मैं बताऊं ना, लोग कहते हैं जी वो आप डॉन के एडिटर थे, लेकिन अब आप ओपिनियन में तो ये लिखते. भाई, मैं डॉन का एडिटर तो 13 साल से नहीं हूं ना. आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन as an op-ed writer, as a columnist. आप बेशक उससे डिसएग्री कीजिए, आपके पास फोरम्स हैं, आप उसमें नीचे अपना डिसएग्रीमेंट डालिए, आप लेटर्स टू द एडिटर में लिखिए, आप मुझे
ट्वीट करेंगे आपने बकवास लिखा, आई हैव नो इशू इफ यू आर पोलाइट एंड यू एंगेज ऑन द कंटेंट, बट इफ यू से ओ तूने तो पैसे ले लिए और तेरी तो माँ आवारा थी, और ये हाँ, आई मीन ऑब्वियसली नहीं, फिर मतलब फिर क्या, आप मुझे बताओ ना, फिर क्या आपसे बात हो सकती है? सो आई थिंक I that question that one of your the podcast regulars wanted answered. I do not think. I think, you know, the paper, um, as a journalist, as a former editor, you say, oh, it can always be better. But I think it has to be seen in perspective. I know that it's not the reader's problem, who still pays हम्म। whatever they pay to get it. You know, how Dawn survived 4 years of a concerted campaign to destroy it financially, because there was no other way they could And influence I policy respect there. Dawn कि even during that, obviously Dawn.com, digital content सब कुछ हुआ largely, but Dawn never looks like Mango Bars or पढ़ लो. I mean Friday Times ने भी No. recently कुछ 4-5 tweet लेके controversy बनाकर एक article किया जो मेरी नज़रों से गुजरा है ना. I was like Friday Times a paper of repute, लेकिन क्लिक्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है. और वो उनके Click. इंस्टाग्राम कमेंट्स पे ही इस तरह की बातें हैं. तमकीनत ने बहुत अच्छे 2 कमेंट लिखे कि उन्होंने इंस्टाग्राम से वो पोस्ट भी हटा दी, एंड बट आर्टिकल अब तक आप, सो इफ यू आर सो एम्बैरेस्ड ऑफ समथिंग कि आपको अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई, कुछ लोगों का ब्लो बैक आया था, तो एटलीस्ट मे बी इशू एन अपॉलॉजी, रिमूव दैट. तो वो जो एक ट्वीट्स लेकर ओ माय गॉड करना, ये बहुत पेपर्स जो इवन रिस्पेक्टेबल है, राइट, लाइक एक्सप्रेस ये समटाइम्स क्लिकबेट डज इट. पता यार पता क्या है शहजाद, अब आई मीन आई आई you know I did at BBC and here, I mean, I pioneered digital platform in Dawn. ये मेरे से पहले तो आपको याद है Dawn.com नाम की कोई चीज नहीं थी. That's something I take great pride in helping create and deliver, and you can only build on it, because that is where the future is. 10 years beyond, pata nahi if people will even buy a hard copy or not. So, but in terms of my editorial ethos, I'm still very conservative. ये clickbait वेट जो है ना, ये ठीक है. I mean, they drive traffic, and traffic means revenues, etc., etc. लेकिन यार कहीं तो लाइन ड्रॉ करो ना, कि आपने allow me to be crude, कि आपने porn site रन करनी है, या आपने न्यूज, I'm not talking about anyone in particular, मैं तो जनरल आपकी मीडिया ethos की बात कर रहा हूँ, कि आमदनी तो प्रॉब्ली पोर्न साइट की न्यूज साइट से ज्यादा होगी, तो फिर वो करो जाके. बट इफ यू हियर, आई मीन, this is not to justify sloppy, boring headlines that you don't exercise any imagination writing, so nobody has the drive, a viewer or a surfer, to click on it. That's just bad, just disinterested, dishonest work. But misleading or शुड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट ऑन ट्विटर स्पैट्स, स्पेशली yeah, अगर आपके किसी दोस्त का हो रहा हो और आपने उसको डिफेंड करना हो, तो आप एक न्यूज़ आर्टिकल लिख दें. मतलब इट्स एम्बैरेसिंग, राइट, कि भाई क्या हो yeah, गया, ये नेशनल डिस्कोर्स में आप क्यों ला रहे हैं सर? आई नो यू हैव टू क्यों रन. ला रहे लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज नहीं, प्रिंट नहीं, not मीडिया at all. सर्वाइव नाउ with all this social media invasion, and how to counter this fake news barrage? देखो, the two things. When I came to Dawn, and ये आज का challenge नहीं है. Can I take you just very briefly back to the BBC and a great director general called Greg Dyke? वो जब गल्फ वॉर के चक्कर में बीबीसी में अपहीवल हुआ था ना, do you remember that sexed up dossier of weapons of mass destruction, etc.? He lost his job in that. वो उसने हम लोग, BBC is an organization about 30,000 people, and with 300-400 senior editor managers कहलाते थे. We were put into one room, and he brought in like 12 youngsters, all of whom came and sat down on the stage with laptops in their laps. And the moderator started asking them one by one, what do you, he says, oh, well, I like police shows only. So what do you do? Oh, I download all the police shows, and in my spare time, and I'm not out working, I watch police shows. What do you, I like music. So you suddenly realize that these, Greg called, and after half an hour, they went away. And he says, these are broadcast assassins. They will spell the death knell for linear broadcasting. Because now they will not wait for you to give them news at 9 o'clock. If they're a news junkie, they'll get it at 6. They'll download it, see it, discard it, go on to something else. The one who's not interested in news. And I think this is a very major challenge even in the West. एलियनेशन जो है ना इंफॉर्मेशन से, कि अब इतनी टेलर्ड मिलती है ना, कि वो एक जनरल इंटरेस्ट जो दुनिया में होता था या अपनी सोसाइटी में होता था, वो अब सबके नैरो होते चले गए.
And I think this is, I, like I'm a traditional journalist, so I find this a bit upsetting. लेकिन मसला क्या है कि you have to reinvent yourself. So when I came in 2006, जैसे हमने इब्तिदा में बात की थी, my emphasis to the team was, and it was a journey that we did together, and I'm so proud people even of a different generation supported me and went along. And then of course Zafar, I requested to join me from the BBC, and he became the resident editor in Islamabad. And Ashar Rahman, who was the News on Sunday editor, came too. And then we had exceptional two, the first women op-ed editors on first and second. I had the privilege of working alongside them both, Mrs. Ubeda Mustafa and the incumbent Aisha Asfal. And all we tried to do was कि अब चैलेंज ये है कि सोशल मीडिया पर तो 1 मिनट का पोस्ट आता है, ठीक है ना, उससे लोगों को जो मिल जाता है मिल जाता है. टेलीविजन पे कार्पेट कवरेज होती है कि भाई इमरान खान वहां गए और वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, वो 4 घंटे आप देख रहे हैं, उसमें कोई स्टोरी मूव नहीं कर रही, वो अपने जीप में बैठे हुए. ये if you give the reader the same thing in the morning tomorrow, do you really think that he or she will bother to kind of look at that and say कि यार ये, they'll throw it away? What you have to do is, which has been done successfully in the West, if you follow Western multimedia context में जैसे हम वहाँ रहते थे, you wouldn't, I was never surprised that Today program BBC का बड़ा niche program होता था, highbrow but top class journalism. I mean, if they did 2.5 hours on air, उसमें से 5-7 stories जो थी ना, they would pick up from the Guardian and from Telegraph, depending on what the story was, and they'd start covering it because they said, हम लोग इस game में ठक 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 ठक, one after the bulletins आते हैं, ये आते हैं. It is the paper's privilege to do laid back, contextualized, researched, exclusive stories, content. And today I feel the resource constraint has meant that there are not many of those, if I'm honest, because आपकी होनी ये चाहिए कि every third day एक कोई आदमी उठाए और वो आपको फोन करे, क्या यार शहजाद, have you read the news today, or have you read the Dawn front page? यार क्या story की उसने, we didn't know about this. That is how you keep print alive, because otherwise it'll be impossible to, it'll be a tall order. इसलिए कि अब मोबिलिटी बहुत है ना. अब जैसे हम तो अभी भी मैं हार्ड कॉपी किताब की पढ़ता हूँ. My wife, who's younger than me, she does a mix of Kindle and hard copy. She likes the hard copy, but the convenience of Kindle is far greater. But my daughter, for example, all her reading, apart from academic books, all her reading is on screen now. And and that's a real challenge. And I think we have to reinvent ourselves, because when I came in 2006, I thought that if Dawn didn't have a singing and dancing multimedia website over my tenure, then I would not be earning my keep, because my paper to kitna bhi acha kar lu, lekin uski access limited, and it has to transform into तो वो काफी हद तक हुआ भी, लेकिन again, it's easy for me to take a very kind of high pedestal position to say ye bhi hona chahiye, ye bhi hona chahiye. But the truth is that all of these things are capital intensive, or given what has happened in the last 4-5 years, I'm amazed that Dawn in particular has survived, and survived with its most important, its integrity intact. Because कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि जी ये less objective and more objective, but to a trained eye one can see they have not moved back an inch from their editorial position on key issues. आप आज भी देख लो, कल भी देख लो, परसों भी देख लो. And I think it's something that sadly, even the best in society, and this pains me, because I remember I was responsible after Abbas left in 2008. In the final 2 years of my tenure at Dawn, I was running the paper, the television channel, and I think that accelerated my departure, because my wife was very fearful that I'm going to die on one of the 3 jobs, and she said, let's go, among other things. But what I realized was that we created an English channel as
okay, maybe they should have gone for Urdu first or something, but their niche was English language journalism. And we created a channel and we polished it, and and it had content, and we emphasized packaging and documentaries and this and that, news related apart from entertainment. And the odd evening, you go out for a meal or something, you meet CEOs and they say, oh, we watch your channel. And I remember the US ambassador telling me that our translation in our media department is very anxious that they lose their jobs, because now all diplomats in Islamabad watch your channel. So they don't need translations of what appears on the Urdu channel, because it's quite comprehensive. And yet, all the CEOs who were, I mean, I was responsible for editorial, rarely discuss business with them, that I know that, an English channel would always be a niche channel, right? It will never have the eyeballs that. But if you believe in Pakistan and putting Pakistan's word, out, a friend of mine messaged me from America saying that I walked into the State Department for some work and your channel was one of the channels up on there. I mean, I don't have a great fetish for, American imperial state. All I'm saying is that is how you got reach through the English language. And yet, all the corporates, who had billions of rupees then, because the economy was doing well, to advertise, they'd say, oh, great channel, we watch it, we love it, They discuss specific content in shows and news and current affairs and this and that, and would not pay a penny to advertise in the English channel because it didn't have enough eyeballs. Now, I would have argued, from the marketing perspective, that a lot, whether it had eyeballs or not, but it had sufficient eyeballs to sell, top of the end shampoos and toothpaste to people, for example, or you advertise special, I don't know, stuff that a certain socioeconomic group is interested in. लेकिन वो नहीं. तो अब चैलेंज जो है ना वो ये है कि इतना बहरान है. And when I say बहरान, the crisis is one of content, I mean, a lot of, I bet you, एक exercise करके देखो कि जो 4, 5, 6, 8 अखबारात और चैनल्स और उनके जो एडिटोरियल हेड्स हैं, उनसे पूछो what do you stand for, what does your channel stand for, let's see if they can come up with something. कोई मैं कोई jargon की बात नहीं कर रहा कि कोई vision statement और ये वो, but what do you want to do in life? You want to mimic, Geo wants to mimic ARY, and ARY wants to mimic Dunia, and Dunia wants to mimic, because they say, oh, वो इमरान को कवर करा, चलो उधर DSNG को कनेक्ट करो. 8 चैनल्स पे आप देख रहे हैं हुजूम खड़ा हुआ है, एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, वो 3 घंटे तक वो स्टोरी कहीं नहीं जा रही. लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा. Anyway. Hope things get better, sir. Thank you so much. नहीं यार, things will get better. देखो मैं बताऊं, things तो पता क्यों बेहतर होंगी, कि मैं और आप तो मैस करने में लगे हुए हैं ना. ठीक है, मैं तो बाहर बैठा हूं, तो मेरे लिए तो ऑलरेडी एक रिलेटिव, चलो आई डोंट हैव मच, बट शुक्र है कि मैं अपना रोटी रोजी कर लेता हूं. आप नौजवान आदमी, आपकी कोई लंबी चौड़ी अभी जिम्मेदारियां नहीं है, यू कैन सिट देयर और यू कैन गेट. लेकिन it has to work out, because वो जो 200 पता नहीं, कोई 220 कहता है, कोई 200 कहता है, कोई सेंसस 204 मिलियन कहता है, वो तो कहीं नहीं जा रहे ना यार. तो the system has to deliver to them at some point or the other. अब वो कौन करेगा? कोई मिसाया आएगा या कोई रीइमेजिनिंग पाकिस्तान वाले आएंगे, वाला. हालांकि वो रीइमेजिनिंग में भी स्पेसिफिक्स की इतनी कमी है. The little that I followed, ठीक भी है. I mean, they're on a raising awareness bench, which is right. That and I mean, हमारे यहाँ तो motives attribute, बस उन्होंने वो शुरू कर दिया, तो वो तो अब इनको यूं स्टैप कर देंगे, वो तो फौज उनको पावर में. It's not about that. I think what they're trying to do is they're trying to force the political parties, giving them the benefit of the doubt, because I don't know the dynamics of the group, कि यार ये मसाइल हैं, इनको एजेंडे पे तो रखो. Yesterday I was hearing Lashkari Raisani speak on one of the things कि कोई हम लोग पूछते नहीं है कि जब बाप बनी थी तो थोड़ा सा शोर हुआ, और अब वो सारा बाप जो है वो पीपल्स पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है,
तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि आर यू टेकिंग अवे द लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बलोच नेशन? क्योंकि फाटा के टूटने के बाद वहां से थोड़ा मुश्किल हो गया ना, वरना तो वो 150 वोट देके उनको 8-10 एमएनएस मिल जाते थे, बेचारे जो कहते थे वो करते थे। आई थिंक व्हाट वी नीड इज और मैं आपको बताऊं, सियासतदानों को तो वो तो हमारे फेवरेट विपिंग हॉर्सेस है ना, उनको यस। तो हंटर मारते रहते हैं, मैं भी आप भी सब में। हम अपने ऊपर भी बड़े सिवियर हैं कि हमारी फेलिंग्स एज जर्नलिस्ट, वी हैव प्रेटेंशंस ऑफ बीइंग प्लेयर्स, वी फार एक्सटेंड गो बियॉन्ड आवर रीमेट, जबकि हमें रिपोर्ट और यू नो एंटरटेन और इन्फॉर्म करना चाहिए और डाइवर्सिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक प्रो पीएमएलएन का दूं और आप पीटीआई का दें। ये नहीं, लोगों को लेट देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि इस मसले पे ये तीन पार्टियां क्या कह रही हैं। यू फाइंड दैट वेरी लिटिल। तो हम भी फेल करते हैं, लेकिन मसला ये कि हम लोग कलेक्टिवली सब मिलके ना 10% भी क्लाउड नहीं है हमारा इन द से। वो जो सिविल मिलिट्री एलीट है ना, वो है। एंड आई थिंक for their own absolute survival sake, they need to sit back, pause, and say, we've been doing this for 70 years. What has it delivered? Okay, it may have delivered a nice house in some colony and a couple of plots and children going off to bad American schools where they only pay 30, because अच्छे American school तो में तो चले जाते हैं ना। मेरी विडो बहन का बच्चा एमआईटी में गया और स्लोन से उसने बीए किया ऑन अ फुल स्कॉलरशिप, उसके हमारे तो उनके तो जहाज के भी पैसे दिए। वी डिडंट हैव द मनी टू पुट द बॉय ऑन द प्लेन व्हेन ही वाज गोइंग, आई स्वेयर। सो तो आप पता नहीं कोई ओक्लाहोमा और ओहायो, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक, आई डोंट नो इनफ अबाउट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, ऑल आई एम सेइंग इट। तो वो तो हो गया, लेकिन व्हाट बियॉन्ड दैट? यू नो कभी तो आपकी भी कोई सोते वक्त रात को, अब मुझे कोई कहता है कि आप ये एक दिन उस पे कहने लगा कोई, दैट यू सो बायस्ड, यू सो दिस एंड दैट, आई बेट यू स्लीपलेस नाइट्स, आई से यू डोंट नो, आई एम गॉन बाय द टाइम माय हेड हिट्स द पिलो। अगर मुझे उस महीने कोई बिल विल का मसला ना हो, बिल विल देना हो, यही है, तो फिर थोड़ी देर बाद भी नंबर क्रंचिंग करता है, जिसमें 60 साल की उम्र में गन शुरू हुई है, लोगों की 30 साल में हो जाती है। लेकिन द ट्रूथ इज दैट और मैं तो बताऊं यार, मेरे मेरे जैसे लोगों का जो प्रिंट प्रिंट में काम करते हैं ना, सारी जिंदगी में तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप ही बहुत ही लिमिटेड है ना। अंग्रेजी जबान में तो 4 लोग पढ़ते हैं, तो मेरा तो कोई प्रिटेंशन ही नहीं है कि मैं ये तीर मार दिया वो कर दिया। ऑल आई से इज कि यार थोड़ा सा कलेक्टिव सैनिटी लाओ, थोड़ी सी एक दूसरे से बात करो, थोड़ा सा ये सोचो कि यू नो कि हम, यार एक लेगेसी की भी ठरक होती है ना यार। मैं बीबीसी की लाइफ लॉन्ग पेंशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट जेनरस वंस, वो मेरी बीवी ने भी मेरे सपोर्ट करने में छोड़ी। हम लोग आ गए और 4 साल में तो अगर डॉन में मेरे बाद वो नहीं होता, आई वुड हैव फेल्ट लाइक अ टू टाइम लूजर। नहीं कि एक तो पर्सनल वो किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, दे पेड मी वेरी वेल, आई मीन लेट्स दैट बी वेरी क्लियर, आई वाजंट वर्किंग, इट वाज नॉट एन altruistic decision to come, it was a professional decision to come, and it was all encompassing, from the work and the freedom, I mean it's incredible, it's mythical कि वो लोग कहते हैं कि somebody was telling me, oh, it's mythical, that, but I said it's true. I was never told what and what not to do. We discussed before I was hired what I thought was good journalism, and they said, we are likewise. उसके बाद देखो शहजाद, ये तो आप रीडर है ना, ये तो आपका भी हक है कि आप मेरे अखबार में कोई इडियोटिक चीज छपे तो आप मुझे सुबह फोन करके कहेंगे यार बासी आपने क्या छाप दिया है ना। जैसे कि कोई मिलिशियस चीज हो, कोई स्कैंडलस हो, कोई डेफेमेटरी हो, तो वो तो आपका हक है ना कि आपने पढ़ने के बाद किया। तो ये हक मालकों ने भी लिया था। मे बी इन 4 years they might have called me 3 times, and when the phone rang, I'd already read what had slipped through, and I said, look, my morning hasn't been ruined by your call at 9:30. Mine was ruined at 7:30 when I first read it, because
you can't get it right all the time, and I'm very embarrassed that this is happening. इट्स End of शॉकिंग story. कि अब तो शायद उतना भी ज़र्व खत्म हो गया। मैंने रिसेंटली किसी को मैसेज किया था, उनका रिप्लाई भी नहीं आया। मतलब इस पे भी नाराज हो जाते हैं कुछ लोग, बट होपफुली वी हैव मोर पीपल लाइक यू रनिंग चैनल सो दैट पीपल गेट द यार न्यूज़ पर दैट नहीं दे नहीं, मोर वांट। पीपल लाइक मी तो इट्स, मेरी टांग ना खींचो। मैं तो खैर मैं तो चला हुआ कारतूस हूँ यार। मेरी तो अब इट्स, आई एम इन द ट्वाइलाइट ऑफ माय लाइफ एंड करियर एंड एवरीथिंग। लेकिन लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि देखो, वो जो हमारा ट्रेडिशनल एसएचओ होता था ना, थानेदार, कि वो देख क्यों रहा है, नीचे देख, खड़ा रहे, बैठ कैसे गया। मीन वी आर जर्नलिस्ट फॉर क्राइस्ट सेक। हाउ कैन यू नॉट बी हेल्ड टू अकाउंट? मतलब आप क्या है? आर यू अ थानेदार जो कहता है कि जी मुझे तो, मैं तो आपके किस दफे में आप किन दफात में काट दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ होगा कि उस यहाँ के जमाने में था कि वो आपको सीआरपीसी में काटेगा या मार्शल लॉ रेगुलेशन में काटेगा। पैसे लेते थे लोगों से, क्योंकि वो मार्शल लॉ रेगुलेशन में तो 3 महीने में ट्रायल होके कोड़े वोड़े लग के वो सारा काम हो जाता था, और सीआरपीसी में वो लॉन्ग ग्रास में किक हो जाती थी गेम। तो दिस, किसी दिन और बैठेंगे यार, मैं कराची आऊंगा ना आपसे गपशप, क्योंकि बड़ी एनेक्डोट्स हैं, हाउ बीबी इज विनिंग ऑफ द इलेक्शन and coming to Karachi. And this was a woman that I'd seen, for example, when she first went in the 80s, जब वो स्विस एयर से और घर पे 70 क्लिफ्टन पे पैरा लगा था, प्री बिलावल हाउस टाइम, और उसको गाड़ी से निकाल के रॉन्ग साइड से ले गए कि कोई साफी उसकी तस्वीर ना खींच ले। और ये, and then landing from Larkana, and I came one flight before her, and I was on the tarmac, and saw the brigadier of the ASF in the army uniform, and she was tentative on traveling. Okay, will they accept it? The army chief has called, but you never know. Will they accept my victory or not? And she gets off the car, and the brigadier shouts. He says, "Oh, Benazir Sahaba ki gaadi lao andar, gaadi lao." And he salutes her, and he says, "Madam, wo aapki gaadi aa rahi hai." And we have opened the VIP lounge because there's a big contingent of international press that they wanted to, which wanted to talk to you. And you suddenly realize the transformation, where in our student days, the Zia oppression and Bhutto's execution, and and long closures of universities and colleges, etc. I mean, I सर आप missed a couple कराची of आए, years. सामने बैठ कर फिर ये सारी गप मारेंगे। आई वुड लव टू हैव यू इन द Absolutely. स्टूडियो इन द पॉडकास्ट, जब जब आप कराची आए नेक्स्ट। वैसे भी आपसे, I mean, good man, keep it up, and थैंक यू सर। unsolicited advice, engage, but don't engage with stupidity, मतलब आप यंग आदमी, मैं भी बड़ा इम्पल्सिव को गाली देता तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन पता क्या है, just bloody mute them. Don't block them, mute them, and move on. You've got nice things to do. You're a talented young man. I'm not trying to patronize you. You're probably far more talented than I ever was, नहीं नहीं but सर, आपकी बात 100% सही है। लेकिन ये कि हम लोग बहुत वक्त जाया कर देते हैं, and I mean, if you get agitated and irritated, that's an hour gone out of your time. कल या मैं हो गया था इस तरह, जब मैंने कॉलम लिखा और वो इंडिया से absolute dribble. I am a liberal Pakistani who's long thought that we should have friendship with India, etc. etc. Anyway, आप thank you जितना so much. प्रिटेंड करें कि आप इफेक्ट नहीं होते, आप इफेक्ट होते हैं। मतलब मैंने कुछ नहीं नहीं, कुछ कहा, मैंने किसी बिल्कुल। के बारे में जो तनकीद भी नहीं थी, उन्होंने रात को मुझे रात के 3 बजे इतनी बातें की हैं कल रात, कि मेरा so sorry. कल की रात आज का दिन भी बर्बाद हो गया कि यार इस आदमी ने ये सब क्यों कहा मेरे बारे में। क्या बट कर दिया या मैंने? हाँ, बट थैंक यू सर। लेट्स ट्राई एंड not let आप this खुश old रहें, affect more us. more more power to you, and Thank you, I sir. mean, I've rambled on. Feel free to cut it to a नहीं नहीं सर, size that people I might want. people please tweet at Abbas No, Nasir, no, tell him what you no, thought of this episode, no, no, because no, no, I think seriously. he should know how much you enjoyed listening to this, and please leave us comments and let us know. Thank you so much, sir, for your time. Thanks ever so much for asking me, and and I hope, I don't think anybody's time, it is worth it. I'm just looking at the clock. Sorry, I overspoke. Always No tend to no sir. ramble on, and you were very kind in not stopping me. No no, All the thank you very so best, much, sir. and hope to see you before long. Thank you. Thank you, sir. बहुत Thank you शुक्रिया. for listening. खुदा Take हाफिज. care.